The complex number 2 plus iota is denoted by u. Its complex conjugate is denoted by u star. Show on sketch of an argon diagram with origin O, the points A, B, and C representing the complex numbers u conjugate, and u plus u star respectively. Describe in geometrical terms the relationship between these 4 points. Okay, so we have a complex number u is 2 plus iota. What about u conjugate? What's that? 2 minus iota. बस imaginary part का sign change कर देंगे, ठीक है? Okay, so I think we'll have to pause our class for a few minutes and allow Khadija and Imayam to finish their conversation for today. आज वाली बातें ख़त्म हो जाएं, इसके बाद फिर कुछ और important काम कर सकते हैं. Let me know when you're done. आज की हो गई ख़त्म? Done? Okay. U equals 2 plus iota and u star equals 2 minus iota. We have these two complex numbers. C is another point, that is u plus u star. And that is 2 plus iota plus 2 minus iota. And this will turn out to be 4. So iota or iota minus iota cancel. Okay, we have another complex number. This is actually a real number, real line के ऊपर आ रहा होगा. या के पास 3 numbers आ गए. उसने कहा sketch के ऊपर show करें ये तीनों points A, B and C. So they're calling U as A and they're calling U conjugate B and U plus U star. They're calling this point C. ये represent कर दें argon diagram के ऊपर. Let's do that. This is the real axis, then you have the imaginary axis. Okay, 2 plus iota. Let me mark these points here. This is 1, this is 2, 1, 2, minus 1, minus 2, minus 1. Okay, 2 plus iota, that point is going to be here. This is point A. 2 minus iota, that is here. This is point B. Point 4, that is going to be on the real axis. 3, 4. This is point C. And we have a point O here. This is the origin. This is right here. So we have to describe the relationship between these 4 points in geometrical terms. What do you think? It's a rhombus. So if you look at it, it's this shape. You can say it's a parallelogram, or you can say it's a rhombus. Rhombus is more precise because rhombus is also a parallelogram. लेकिन यहाँ पे उसकी lengths भी equal है सबकी. So you should be writing rhombus here. ठीक है? It's also a kite. Kite भी कह सकते हैं इसको. But again, rhombus is the most specific form of all of those. Rhombus is also a kite. Rhombus is also a parallelogram. Rhombus सबसे ज़्यादा precise होगा because it's telling you 2 things. एक तो opposite sides parallel है. That's one thing. और उसके साथ साथ all the sides are also equal. दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ आ रही हैं. सारी sides equal भी हैं और opposite sides parallel भी हैं. तो ये चीज़ क्या represent कर रही है? It's a rhombus. Okay, parallelogram में सारी sides equal होना ज़रूरी नहीं होता. So that would not describe this completely. Okay? इसी तरह kite में आपकी sides का equal होना या opposite sides का parallel होना ज़रूरी नहीं होता. Even though it's a kite as well, it doesn't describe this relationship completely. So rhombus describes it completely. So you should be writing rhombus here. Is that okay? That's 4 marks. ठीक है? That was the first part. कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, बस आपने वो पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और उसको डिस्क्राइब कर दिया. You got rhombus from that. Any questions on this? No?
Okay, let's look at the second part. Second part में उसने कहा express u over u star in the form x plus iota y where x and y are real. ये आप कर लें, ये आप कर सकते हैं. u over u conjugate, that's 2 plus iota over 2 minus iota. इसको आपने x plus y iota फॉर्म में लिखना है. इसके भी इसमें 3 मार्क्स दिए हुए हैं. अगेन दैट्स वेरी इजी 3 मार्क्स. क्या करें? मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है. इन द डिनोमिनेटर यू गेट 2 squared minus iota square. In the numerator you have 2 plus I whole square, which is 4 plus 4 iota plus iota squared. Now in the denominator, in the numerator you have 4 plus 4 iota minus 1. In the denominator you have 4 plus 1, and that gives you 3 plus 4 iota over 5. Or if you break it down into 2 parts, that's 3 over 5 plus 4 over 5 iota. This is u over u conjugate. ठीक है? Any questions on this? No? Okay, let's look at the third part now. So first 2 parts were relatively straightforward. अब last part में वो कहता है by considering the argument of this number u over u conjugate, or otherwise को आप ignore करते हैं because this is going to be the easiest way. इसको use करके prove that this is true. ठीक है? Arguments use करके आपने ये prove करना है. Now I've got u over u conjugate, that is 3 over 5 plus 4 over 5 iota. What's the argument of this complex number? Basic angle निकाल लें. Tan alpha equals 4 over 5 over 3 over 5. What does that give you? What's alpha? इसको tan inverse वाली फॉर्म में रख लें. आप जो प्रूफ करना है वो tan inverse वाली फॉर्म के अंदर, उसी फॉर्म के अंदर रहने दें. So you get tan inverse of 4 over 3. That's your alpha. ठीक है? ये हो गया. अब एक तो आपके पास इसका आ गया. अब u over u conjugate है, डिविजन हो रही है. डिविजन में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट से क्या होता है? दे गेट सब्ट्रैक्टेड. आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ u over u conjugate, argument of u over u conjugate is actually going to be equal to the argument of u minus the argument of u conjugate. Right? So that's the relationship that you have to use. अब क्या करें उससे पहले? You have to find the argument of u and the argument of u star as well. वो भी आपको find करने पड़ेंगे, उसके अंदर input कर देंगे. Let's find them. u is 2 plus iota. इसका argument निकाल लें. Tan alpha equals 1 over 2. Alpha equals tan inverse of 1 over 2. Now remember, ये first quadrant के अंदर है, तो आपका argument भी वही होगा जो basic angle है. So this is also your argument. So argument in this case is also the same because ये first quadrant के अंदर है, तो वही आपका argument है. Tan inverse of 4 over 3. Similarly, here as well, the argument of u is tan inverse of 1 over 2. Make sense? Now similarly find the argument of 2 minus iota. सबसे पहले बेसिक एंगल फाइंड कर लें. आप वैसे भी ग्राफिकली भी सोच सकते हैं. 2 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट जो भी होगा, 2 माइनस आयोटा का क्या होगा? उसका नेगेटिव हो जाएगा. बस नीचे आ रहे हैं ना, बस वो ग्राफ के ऊपर. आप देखें ग्राफ के ऊपर, दिस इज द पॉइंट u, दिस इज u स्टार. तो अगर ऊपर वाला आर्गुमेंट कुछ भी है, लेट्स से दिस इज आई डोंट नो 0. लेट्स से ये होता pi over 3. लेट्स अज्यूम दिस वाज pi over 3. देन दिस वुड बी minus pi over 3. नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, सब कॉन्जुगेट इसका नेगेटिव हो जाएगा. सो यू कुड राइट दैट डायरेक्टली इफ यू वांटेड, बट इफ यू कांट फिगर दैट आउट, आप दोबारा से फाइंड कर लें. tan alpha equals 1 over 2 again. Alpha will turn out to be tan inverse of 1 over 2. But now since this is in the second quadrant, in the fourth quadrant, sorry, ये नीचे आपका आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइड से मेजर करेंगे, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा?
argument of u star, that is going to be minus tan inverse of 1 over 2. Any problems with this? You've got 3 arguments, now you can just input them. डायरेक्टली लिख सकते, बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हैं. डायरेक्टली आप लिख सकते हैं माइनस tan inverse of 1 over 2. Okay? Noor, what's 10:35 plus 10 minutes? Argument of u star that equals minus tan inverse of 1 over 2. ठीक है, इसके अंदर इनपुट करते हैं हम. फर्स्ट आपके पास आ गया tan inverse of 4 over 3 equals tan inverse of 1 over 2 minus tan inverse of 1 over 2. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यू गेट 2 tan inverse of 1 over 2 that equals tan inverse of 4 over 3, and that's what you have to prove. ये उसने प्रूफ करने के लिए कहा था, and you've done that. ठीक है, तो वही आपने यूज़ किया आर्गूमेंट्स के दरम्यान में रिलेशनशिप. व्हेनेवर यू हैव समथिंग लाइक दिस, मैं आपको बताया था, जब भी आपको इसको ऐसी फॉर्म होगी tan inverse ऑफ समथिंग और उसकी एक इक्वेशन बनी हुई है, आपने ये आर्गूमेंट्स वाला रूल ही यूज़ करना है उसके अंदर. मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर्गूमेंट्स ऐड हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो आर्गूमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कशीट. But before I actually do this, I want to tell you a property of equilateral triangles. Okay, now that's not exactly complex numbers, लेकिन equilateral triangles यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए. Let me draw an equilateral triangle here. We have the circle. And inside the circle we have an equilateral triangle. Maybe this is one point, this is another point, and this is a third point. Does it look equilateral? No. A, B, C. Okay, maybe. So this is AC, this is BC, and this is AB. So this is an equilateral triangle that is inside a circle like this. So we are focused on the triangle right now. तो इस circle को मैं dotted कर देता हूँ. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उसके थ्रू मैंने एक सर्कल पास कर दिया. ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट मे बी समवेयर हियर. लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. लेट्स कॉल दिस पॉइंट O. Now if I were to join these points with this center of the circle, vertices को अगर मैं center से join करता हूँ, like this, and this. What do you think about the lengths of these lines? They're all the same. It's the radius of the circle, so they're all the same. ये lengths सारी same है. What about the angle between these lines? We know that this complete angle is what? 60 degrees.
This complete angle is also 60 degrees. This complete angle is also 60 degrees. ये तीनों angles 60 degrees हैं. Yes, I know. Will AOB be like the double of 60 and it is just 1. Yes. So if this is 60 degrees, if we consider, you're saying AOB, yeah. So if we consider this arc, this arc or this chord, ये chord जो है, it's making an angle 60 on the circumference. What about the angle at the center? It's going to be twice that. That's 120 degrees. And you could use the same logic for the others as well. 30-30 करके भी आप कर सकते हैं, बाकी 120 बच जाएगा. So this is also 120, and the third one here is also 120. Make sense? So if we have an equilateral triangle in which we have a point like this, जिसके तीनों vertices से same distances हो, अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जिनका तीनों वर्टेक्सेस सेम डिस्टेंस हो, तो एंगल्स क्या बनते हैं? 120 डिग्रीज एंगल बनता है. मेक सेंस? सो इफ यू हैव एनी ट्रायंगल, the other variant of this would be, if you have any triangle in which there's a point that is at an equal distance from all the vertices and the angle between those lines is 120 degrees, that means it's an equilateral triangle. Yes. ये रीजनिंग आपको समझ आ गई सारी? सर्कल में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से सर्कल प्रॉपर्टीज यूज करके वी फाउंड दोस एंगल्स. अच्छा, लेट मी राइट दिस डाउन नाउ. डज एवरीवन गेट दिस? एक तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, या तो आप एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें तो उससे प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, या आप तीनों साइड्स इक्वल प्रूव कर दें उससे प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है. This is another way of proving that a triangle is equilateral. And what's that? If you have a point inside the triangle that has an equal distance from all the vertices, one thing, and the angle between those lines, between the line joining the point and the vertices, if the angles between those lines is 120 degrees, अगर ये दोनों conditions meet हो रही हो, that proves that the triangle is equilateral. ये किसी और triangle में नहीं हो सकता. ओके, बिकॉज अगर ये देखें, ये अगर ये 120 है, इसका मतलब है कि ये एंगल कितना हुआ? ये 60 हुआ. ओके, तीनों एंगल्स 120 होंगे, तीनों एंगल्स आपके 60 होंगे, एंड दैट विल प्रूव दैट इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. मेक सेंस? ये प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? नाउ यू हैव टू नो दिस. अगेन इट्स नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन ये आपको ये वाली प्रॉपर्टी एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस के अंदर आपको ना यूज़ करनी पड़ेगी when you're proving the triangle is equilateral. This is one way to do it. इसका एक और भी मेथड हो सकता है उसको प्रूव करने का, but this is going to be quickest way of doing that. उसका एक और कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा, if you can figure that out, वो भी डिस्कस कर लेंगे, but this is what I will be using here in this question. ये क्लियर है सबको? ठीक है. अच्छा, let's get back to this question now. So now that we know that property, let's do this question. This is question number 9 from the worksheet. There's a complex number w that is given by this. W equals -1/2 plus iota square root of 3/2. In the first part, we have to find the modulus and the argument of w. Okay, can anyone tell me the modulus and the argument? ये आपने कर लिया? ये क्या आता है? Modulus is 1. Argument? 1/3 pi. You can say pi over 3. That's the argument. ये फर्स्ट पार्ट पे आपने ये कर लेना है, मॉडुलस और आर्गुमेंट्स निकाल लेना है. ठीक है. 2 pi over 3, इट कैन नॉट बी pi over 3. pi over 3 आपका एक्यूट एंगल होगा. इट्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई में से माइनस करेंगे pi over 3, इट शुड बी 2 pi over 3.
इससे आपका बेसिक एंगल पाई ओवर 3 आएगा, बट सिंस वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट the angle is the point is going to be in this quadrant. आपको ये बेसिक एंगल मिला है तो पाई में से माइनस करेंगे and you get 2 pi over 3. The argument will be 2 pi over 3 here. That's pi minus pi over 3, which is 2 pi over 3. आपके पास argument of W आ गया और modulus of W आ गया. This is how to do it. ठीक है? That's the first part. You have to find the modulus in the argument. Make sense? Let's do the second part. Now it says the complex number z has modulus r and argument theta. So now there's another complex number z. Let me just write that here. It has modulus r and argument of z is theta. Where theta is between minus pi over 3 and plus pi over 3. इन दोनों के दरम्यान में थीटा की वैल्यू है. It says state the modulus and argument of wz and z over w. And it says state. इसका तो कोई कैलकुलेशन, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे. You could do it directly somehow. क्या कर सकता है? Modulus and argument of wz and the modulus and argument of z over w. What can we do? Question number 9 कितने लोगों ने attempt किया है? Okay. Yes, Fatima. Any idea? Second part. Second part नहीं हुआ था? Okay. Yes, Isha. So remember, WZ is a product and Z over W is a quotient. जब मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आर्गुमेंट्स ऐड हो जाते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो मॉडुलस डिवाइड हो जाते हैं, आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. दैट्स ऑल यू हैव टू यूज हियर. ओके. सो मॉडुलस ऑफ WZ, एक आपको WZ के फिगर आउट करने हैं. मैं यहाँ पे W के पे लिख लेता हूँ. W का मॉडुलस हमारे पास ऊपर क्या था? It was 1 and the argument of W was 2 pi over 3. ये हमें ऑलरेडी पता है. अब उसने पूछा है WZ के आर्गुमेंट और मॉडुलस बताएं और Z over W के बताएं. ठीक है. So what's the modulus of WZ? That's the modulus of W into the modulus of Z. दोनों को multiply कर दें. Yes? Did somebody say something? No? Okay. Modulus of W is 1. The modulus of Z is R, and we get R from that. ठीक है? अच्छा. Argument of WZ. What would that be? Yes, theta plus 2 over 3 pi. आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब ये इक्वेशन लिखना आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. That's fine. This is just for your notes. आपने इनको ऐड कर दिया. Argument of W is 2 pi over 3. Argument of Z is theta. Just add both of them. 2 pi over 3 plus theta. That's the argument of W. ठीक है? Now let's think about Z over W. So modulus of Z over W, that is equal to the modulus of Z over the modulus of W. Z का modulus R है, W का 1 है. We get R from this as well. इसका modulus भी R हो गया. And then we need the argument of Z over W. That would be argument of Z minus the argument of W. Z का argument क्या था? Theta minus the argument of W, that is 2 pi over 3. This is the argument of Z over W. ये आपको चार चीज़ें figure out करनी है. Modulus for both of them are R. The argument of WZ is 2 pi over 3 plus theta. The modulus of the argument of Z over W is theta minus 2 pi over 3. This is what we had to figure out.
दैट्स 4 मार्क्स, बस आपको ये करना था यहाँ पे, ठीक है? नो प्रॉब्लम्स इन दिस? Okay, let's look at the third part. Now it says, hence explain why in an organ diagram the points representing Z, WZ and Z over W, they are the vertices of an equilateral triangle. Why do they make an equilateral triangle? Now to be able to understand this, it's going to be better that you draw an organ diagram ताकि आपको समझ आ रही हो exactly वहाँ पे क्या हो रहा है. So we have this organ diagram. This is the real part, this is the imaginary part. The points are Z, W, Z and Z over W. Yes? So if the lengths of the triangle are all equal, if the lengths are equal, doesn't that just prove that it's an equilateral triangle? But are the lengths of the triangle all equal to R? Vertices क्या हैं? Z, Z over W and WZ. No, sorry. Vertices are, yeah, Z, WZ and Z over W. ये तीन vertices हैं. You have to prove that they make an equilateral triangle. Are the lengths all going to be equal to R? That's the distance from the origin. ये उनकी lengths नहीं है. R is the distance of each of those points from the origin. Okay? So ये अगर तो ये lengths होती फिर तो आपको वैसे ही नजर आ रहा है. Lengths are all equal. Z का भी वही मॉडुलस है, WZ का भी वही है, Z over W का भी वही है. फिर तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. You just say the lengths are all equal, so it's an equilateral triangle. But R does not represent the lengths. It represents the distance of each of those points from the origin. वो triangle के lengths नहीं बता रहा. Is that okay? Now let's represent these points on an organ diagram. अब कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई values ही नहीं है. R की terms में है और theta की terms में है. But we know that theta is between minus pi over 3 and plus pi over 3. Pi over 3 कितना होता है? 60 degrees. So minus 60 और plus 60 के दरमियान में कहीं पे point Z आ रहा है आपका. So आप इसको कहीं भी मार्क कर दें इस quadrant के अंदर. ये देखें, let's say this is plus 60, this is minus 60. इस interval, इस range के अंदर कहीं पे भी मार्क कर दें इसको. ठीक है? Because we just want to understand what the situation is like. Let's say this is point Z. मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया इसको. Now the argument of Z is what? Theta. And the modulus of Z, that's the distance from the origin, that is R. So I mark this point here. This is theta. This is Z, which has an argument of theta. Make sense? If this is Z, what about WZ? WZ का मॉडुलस भी R है, तो वो भी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा? R डिस्टेंस के ऊपर. जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ उसकी होगी वहाँ पे. बट व्हाट अबाउट द एंगल? आर्गुमेंट ऑफ W इज 2 pi over 3 plus theta. यानी जो थीटा आपका है उसमें क्या करें? 2 pi over 3 ऐड कर दें. 2 pi over 3 कितना होता है डिग्रीज के अंदर? टू अंडरस्टैंड इट बेटर, इट्स 120 डिग्रीज. सो इससे 2 pi over 3 और ऊपर चले जाएं, यहाँ पे आपका पॉइंट कहीं पे आ जाएगा WZ. Is that okay? Let's plot that point somewhere here. 120 degrees roughly जो है कहाँ पे जा सकता है? इधर से maybe somewhere here. तो यहाँ पे कहीं हो, maybe here. Okay. This is the point WZ, and if I were to join this with the origin, it would look like this.
Okay, so I've got the point Z and I've got the point WZ. The lengths don't look equal right now, so you can just make it slightly shorter, so maybe somewhere here. ये आपका पॉइंट WZ है. मेक सेंस? अब ये एंगल ऊपर कितना आएगा? ऊपर वाला एंगल होगा आपका यहाँ से यहाँ तक. दिस इज 2π/3. थीटा प्लस 2π/3 एंगल था ना, आर्गुमेंट था, तो आपका उधर चला गया. यहाँ तक क्लियर है? देन वी हैव अनदर पॉइंट दैट इज Z/W. Z/W कहाँ पर होएगा? इसकी लेंथ भी कितनी है? इसका मॉडुलस भी कितना है? R. So distance from the origin is still R. What about the argument? Angle from the positive x-axis. What's that? Theta minus 2π/3. तो अगर आप थीटा से स्टार्ट करें, दिस इज द लाइन, इसमें से 2π/3 माइनस कर दें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ से नीचे की तरफ 2π/3 चले जाएं. सो दैट पॉइंट मे बी समवेयर अराउंड हियर. इसको यहाँ पे कर दें मार्क, में भी यहाँ पे शायद हो कहीं पे. Here. यहाँ पे कहीं हो सकता है वो पॉइंट हो. लेट मी जॉइन दिस पॉइंट विद द ओरिजिन एज वेल. नाउ द एंगल हियर इज थीटा माइनस 2π/3. तो ये इन दोनों लाइंस के दरम्यान में एंगल है. ये एंगल ये कितना होएगा? दिस इज 2π/3. दिस इज द पॉइंट Z/W. Any problem until this point? This angle is 2π/3. This angle is 2π/3. What about the third angle? It's also 2π/3. 2π total angle होता है. दो angles हैं 2π/3. The third is going to be 2π/3 as well. So तीनों angles आपके पास दरम्यान में क्या आ गया? They are 2π/3. Now how do we prove that Z, WZ and Z/W जो तीनों पॉइंट्स हैं, इनका नाम तो दिया इसका नहीं, जो तीनों पॉइंट्स हैं, they are making an equilateral triangle. So we have to prove that this triangle is equilateral. ये वाली जो triangle है, ये आपने प्रूव करना है कि equilateral है. How do you do this? Yes, so we just did this property. Origin से distances तीनों points के equal है, और angles क्या बन रहे हैं origin से तीनों points के? 2π/3. Both of those things together, they mean it's an equilateral triangle. Make sense? Any problem with this? Another way to do this would be, can you think of another way? So all of these triangles that we see here, this triangle, they're all isosceles. Why? Because the two lengths are equal. This is R, this is also R. अगर ये दोनों लेंथ्स R हैं, तो ये जो बेस एंगल्स हैं, ये कितने होंगे? दोनों इक्वल होंगे. 2π में से 2π/3 माइनस कर दें, कितना बचा? π/3. उसको हाफ कर दें, यू गेट दिस एंगल π/6 and this angle π/6. ये भी π/6 हैं, ये वाले एंगल्स भी π/6 हैं. सारे एंगल से कितने हो गए? π/6. π/6 प्लस π/6 is π/3. तो ये पूरा एंगल हो गया π/3. So all these angles are π/3, which is actually 60 degrees. Since all angles of the triangle are equal, it's an equilateral triangle. So this is easier to think of अगर आप इस तरह से बस सोच रहे हैं, लेकिन इसको लिखना जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा. आपको सारा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा. क्या लिखेंगे? ये 2π/3 है, you'll say this is an isosceles triangle, so that's why this is π/6, this is π/6. दूसरे एंगल के π/6 होंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, π/3 आएगा, and then you'll prove that it's an equilateral triangle. Although it's pretty straightforward as well, इसकी वर्किंग काफ़ी लंबी हो जाएगी. उसको आपको स्टेप्स में लिखना पड़ेगा सारा, तो it's going to become pretty long. तो इसका क्विकर तरीका क्या होएगा? अभी तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो लिख देंगे.
So we'll just say so one, distance of all points from origin is equal it's R number 2, all angles made by the vertices, the angles made by the lines between the vertices and the origin are all the same as well, which are 2 pi over 3. Origin से सारे lengths equal हैं और origin से सारे angles equal हैं. That proves it's an equilateral triangle. So ये दोनों चीज़ें prove करती हैं it's an equilateral triangle. Both points, yes. Both these conditions together mean it's an equilateral triangle. If only one of them is true, that's not enough. ये थर्ड पार्ट क्लियर है सबको? ये दोनों कंडीशंस लिखेंगे फिर आपको मार्क्स मिलेंगे. दोनों कंडीशंस के एक मार्क होएगा. ठीक है. अच्छा, ये ग्राफ सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. अभी ये फर्स्ट टाइम मैंने बना दिया, बट इफ यू गेट अ सिमिलर क्वेश्चन नाउ यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट मेंटली, राइट? ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है सारे, राइट? ओरिजिन पे एंगल सेम बन रहे हैं. आपको सिर्फ इन 2 पॉइंट्स लिखने के मार्क्स मिलने हैं. यू डोंट हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. दिस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट. पर इस तरह का कुछ और सिमिलर कुछ आए, यू नो यू कैन जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द ग्राफ. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी यहाँ पे 2-3 और क्वेश्चंस में आप देखेंगे रीसेंट पास्ट पेपर्स से यूज हो रही होगी. सो यू शुड नो दिस. ओके, अच्छा, नाउ लेट्स डू द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट में उसने क्या कहा है? In an arcane diagram, the vertices of an equilateral triangle lie on a circle with center at the origin. One of the vertices represents the complex number 4 plus 2 iota. Find the complex numbers represented by the other 2 vertices. Give your answers in the form x plus iota y, where x and y are real and exact. Yes. Okay, let's actually just understand the situation first. We have a complex number which is 4 plus 2 iota. ये 4 plus 2 iota एक complex number है. And we have some circle with center at the origin. This is the circle. इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है that is 4 plus 2 iota इसके circumference के ऊपर. So maybe that is around here. This is 4, this is 2, maybe slightly below that. So this is 4 and this is 2. 4 plus 2 iota, this is that point. ये एक पॉइंट है आपके circumference के ऊपर. That's what is given. The vertices of an equilateral triangle lie on a circle with center at the origin. So हमने circle बना लिया with center at the origin. जो vertices हैं equilateral triangle के वो इस
सर्कल के ऊपर कहीं पे लाई करता है. One of those vertices represents the complex number 4 plus 2 iota. वो हमने represent वहाँ पे mark कर लिया. We have to find the complex number represented by the other two vertices. बाकी दोनों vertices जो हैं उनके आपने find करने हैं complex numbers. Answers in the form x plus y iota आपने देने हैं, where x and y are both real and exact. So दूसरा point आपके पास कहाँ पर होगा? इधर कहीं हो सकता है, maybe somewhere here, and then the third point will be somewhere here, right? और इस तरह से ये triangle बनेगी, something like this, okay? ये आपकी equilateral triangle बन जाएगी. You know this is 4 plus 2 iota. How do you find the other 2 points? अब इसको आप graphically सोच सकते हैं किसी तरह से कि अच्छा ये एंगल आपको पता है, ये कुछ भी है, उससे फिर 2π/3 उधर जाएंगे आप तो आपको अगला पॉइंट मिलेगा, उसी तरह रोटेट करके फिर आपको अगला पॉइंट मिलेगा. दैट्स हाउ यू कुड थिंक ग्राफिकली. बट द प्रॉब्लम हियर इज, अगर आप इसको करके देखेंगे, इफ यू ट्राई दिस ग्राफिकली लाइक दिस, आपके आंसर्स तो आ जाएंगे लेकिन आपसे ना वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आएंगे. वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर वो आपके पास नहीं आ रहे होंगे. ठीक है, आप करके देख लें, आप ट्राई कर सकते हैं. एग्जैक्ट नहीं आएंगे, वो डेसिमल्स में आ जाएंगे, इवन दो दैट विल बी द करेक्ट वर्टिसेस. आप इसको रोटेट करके इस तरह से निकाल सकते हैं, एंगल्स यूज़ करके, कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके आपके पास वो आ जाएंगे. सो व्हाट एल्स कैन बी यूज? इन दिस क्वेश्चन we have done something in the previous parts that we can actually use here. एक वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 4 plus 2 iota. आपको बाकी दो वर्टिसेस फाइंड करने हैं. Have we done anything in this question before that we can use to figure this out? अगर तो सिर्फ उसने ये पूछा होता फिर तो हम कर लेते, फिर तो आसान था. थीटा प्लस 2π/3 उसका आर्गुमेंट आ गया, r उसका मॉडुलस है, उसका मॉडुलस इसका इक्वल होएगा. आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वो तो कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं आता. सो कॉज ऑफ 2π/3 प्लस वो थीटा करेंगे, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा. सो व्हाट एल्स कैन वी डू? बेसिकली उसने एक पॉइंट दिया है 4 plus 2 iota. हमने पहले एक जनरल पॉइंट के लिए सब कुछ प्रूव कर लिया. एक पॉइंट था, उसने कहा था एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका मॉडुलस r है और आर्गुमेंट थीटा है. The only condition is that theta is between -π/3 and +π/3. So if there's any complex number that has an argument between -π/3 and +π/3, z, wz and z/w will be vertices of an equilateral triangle. Right? Z could be any point. Z की कोई वैल्यू तो स्पेसिफाइड नहीं थी वहां पे. तो हम क्या कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो ये पॉइंट है 4 plus 2 iota, दिस इज z. इसको हम z से डिनोट करते हैं बिकॉज z कुड बी एनीथिंग, राइट? इसको z से करते हैं. इसका आर्गुमेंट इस रेंज के अंदर आता है, आप चेक कर लें. इसका आर्गुमेंट उस इंटरवल के अंदर आता होगा, इसका मतलब इसको z एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स z इक्वल्स 4 plus 2 iota. आपने ये पॉइंट एक ले लिया. हाउ डू यू फाइंड द अदर पॉइंट्स था? अगर z एक वर्टेक्स है तो बाकी वर्टिसेस क्या हैं? wz and z/w. So you just find out what wz is and what z/w is. You know w as well. w क्या था? एक मिनट. w was -1/2 plus square root of 3/2 iota. ये दोनों चीजें आपके पास हैं, आप बस wz इवैल्यूएट कर लें. दैट विल बी 4 plus 2 iota into -1/2 plus square root of 3/2 iota, and z/w is
4 plus 2 iota divided by minus 1 over 2 plus square root of 3 over 2 iota. इनको सिंप्लीफाई करेंगे और इनको x plus y iota की फॉर्म में लिखेंगे और आपके पास वो वर्टिसेस आ जाएंगे जो बाकी दोनों. यस W का तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है. हमने ऊपर क्या प्रूव किया है? फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z which has modulus r and argument theta, z is a general point. Z is a general point. अगर उसको हम w से मल्टीप्लाई करें या z over w करें तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है. दिस थिंग इज स्पेसिफिक टू दिस पॉइंट w. वो w के पर्सपेक्टिव से हमने प्रूव किया है वो कि z WZ and Z over W, they will be equilateral triangles vertices. तो जब हम 4 plus 2 iota को Z assume कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो W के साथ ही वो प्रॉपर्टी. इट्स नॉट जस्ट ट्रू फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. ये सिर्फ W, अगर आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है फिर ये होल्ड कर दिए वाली चीज़, हम वही उसको यूज करेंगे. सो इसको अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे आप, आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे. दे विल बी द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल. 30 फ्रॉम द वर्कशीट. It says without using a calculator, use the formula for the solution of a quadratic equation to solve this. ये first part तो कर लेंगे, बस quadratic formula अप्लाई करना है. इसमें a is 2 minus 1, 2 minus iota, a is 2 minus iota, b is 2 and c is 2 plus iota. Quadratic formula में values input करेंगे, फिर वो आयोटा की टर्म्स में कुछ आ रहा होगा, वो आयोटा स्क्वायर्स कुछ आ जाएंगे, उनको -1 में कन्वर्ट करेंगे. बस सिंप्लीफिकेशन है, फिर डिवीजन करनी पड़ेगी तो वो आप कर लेंगे, हो जाएगा ना. राइट, फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, बस डिनोमिनेटर में भी आयोटा आ रहा होगा तो आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर. ये आप कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट. लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट. द कॉम्प्लेक्स नंबर w is defined by this. In an argand diagram, the points A, B and C represent the complex numbers W, W cube and W star respectively. Where this denotes the conjugate, we know that. W steric, that's the conjugate. Draw the argand diagram showing the points A, B and C and calculate the area of the triangle ABC. अच्छा, सबसे पहले तो हमें वो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो पहले उन पॉइंट्स को फिगर आउट करना पड़ेगा कि उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. राइट, सॉरी. अच्छा, W is equal to 2e 1 over 4 pi iota. What about W cube? W cube क्या हो जाएगा? 2e raised to power 1 over 4 pi iota whole raised to power 3. So it becomes 8e raised to power 3 pi over 4 iota. This is W cube. 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, पावर तो मल्टीप्लाई होगी. अच्छा, W conjugate. What about this? -2. इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस लगा दें. राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 into e raised to power -1 over 4 pi iota. बिकॉज रिमेंबर कॉन्जुगेट में क्या होता है, आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x उतना ही x एक्सिस के नीचे चला जाता है. सो इट्स एसेंशियली अ रिफ्लेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो अगर एंगल पहले पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है, अगर पहले नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाता है. ओके, कॉन्जुगेट में होता है. दीज आर द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट वी हैव. अच्छा, वी कांट रियली प्लॉट देम राइट नाउ बिकॉज हमें इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता. तो क्या करेंगे, इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x plus y आयोटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें. हाउ डू यू डू दैट? कॉस और साइन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लें पहले. सो इट बिकम्स 2 is r. लेट मी राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म हियर फर्स्ट. r into cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उस फॉर्म में हम लिख रहे हैं. ठीक है. नाउ व्हाट्स w? w equals 2, r is 2, into cos theta, that means cos of pi over 4, plus iota sine of pi over 4. ये आप evaluate कर लें कैलकुलेटर से क्या आता है.
2 से मल्टीप्लाई करके इवेंचुअल आंसर क्या आता है? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा. दिस इज व्हाट यू गेट. दिस इज W. इफ दिस इज W, यू ऑल्सो नो द कॉन्जुगेट. आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली पता है कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए. इसमें माइनस आ जाएगा. अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा. ये आपके पास दूसरा W कॉन्जुगेट हो गया. व्हाट अबाउट W क्यूब, द वन इन द मिडल? W क्यूब को भी कन्वर्ट कर लें उसके अंदर. So W cube equals 8 into cos of 3 pi over 4 plus iota sine of 3 pi over 4. ये भी कैलकुलेटर से इवैल्यूएट कर लें, देखें क्या आता है. W cube आपके पास कुछ आ जाएगा. What's this? I think it will be under root 2 into 4 square root of 2 probably. अच्छा नहीं, ये माइनस होना चाहिए. हाँ, ये माइनस होना चाहिए. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है. और फिर आई थिंक 4 अंडर रूट 2 आयोटा. एक मिनट, आयोटा की वैसे होती है उसके अंदर. आप सिर्फ ये इवैल्यूएट करें ना, साइन अलग अलग टर्म्स इवैल्यूएट करें. कॉज ऑफ 3 पाई ओवर 4 इंटू 8, सी व्हाट दैट इज. एंड साइन 3 पाई ओवर 4 इंटू 8, वो देखें क्या आता है. यू गेट दिस. यही आते हैं. ये कंफर्म नहीं है मुझे, आप देखें, चेक करें. माइनस 402 प्लस 402 ऐड. ये आपके पास तीनों नंबर्स आ गए. ठीक है, ओके. वी गॉट दीज 3 नंबर्स. अब क्या करेंगे, इनका प्लॉट करना. क्या, कैसे? यहाँ पे किया ना, उसको यूज़ किया है. सो यहाँ पे cos पाई ओवर 4 था, तो cos 3 पाई ओवर 4 इट्स द सेम बेसिक एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो बस वो नेगेटिव हो गया. और ये 2 था, ये 8 था, तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया. इस तरह sin 3 पाई ओवर 4 सेम बेसिक एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. सो इट्स द सेम वैल्यू, बट वो 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया. अच्छा, now let's draw these points on log diagram. क्या represent कर रहे हैं? W is A, W cube is B, and W is, yeah. So this is A, this is B, and this is C. इन points को represent कर दें. अब आप जो आपके एक्सिस होंगे उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट के टर्म्स में ही अपनी वैल्यूज लगते हैं, वरना वो प्लॉट करने मुश्किल हो जाएंगे. तो अब एक्सिस इस तरह से बनाए, ये 0 है. देन यू हैव अंडर रूट 2 हियर, यू हैव अंडर रूट 2 हियर, एंड दिस इज माइनस अंडर रूट 2. माइनस चाहिए आपको, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 2 3 4. दिस इज माइनस 4 अंडर रूट 2, दिस इज 4 अंडर रूट 2, दिस इज माइनस 4 अंडर रूट 2, this is plus 4 under root 2. Make sense? ये आपने मार्क कर लिया. आर्गन डायग्राम के ऊपर आपको इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है. इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. ओके, पॉइंट A, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, दैट्स दिस पॉइंट. दिस इज A. माइनस 4 अंडर 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, दैट इज दिस. दिस इज B. And C, under root 2 minus under root 2 iota, that is going to be right here. This is the point C. ये आपने ड्रॉ करनी है. इसने क्या आर्गन डायग्राम ड्रॉ करें and calculate the area of the triangle ABC. Now let's draw that triangle. The triangle is going to look like this. Okay, this is a triangle. This is the triangle ABC. अच्छा, ब्रेक खत्म हो गया. We are resuming. We have resumed in fact. तो प्लीज फोकस कर लें थोड़ा सा. अच्छा, ABC 3 पॉइंट्स हैं. ABC 3 पॉइंट्स हैं. हमें इस ट्राइंगल के एरिया फिगर आउट करना है. हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल?
रिमेंबर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये किया था, हमने कहा क्या क्या कहा था, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल इस तरह से हो जो ग्राफ के ऊपर इस तरह बनी हो, आपने क्या करना है, जो भी साइड वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है उसको बेस ले लेना है। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल साइड है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल नहीं है, बट वी हैव अ वर्टिकल साइड। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक दिस थिंग एज द बेस, इसको बेस ले लें। इफ दिस इज द बेस, व्हाट वुड बी द हाइट? आप इसको एक्सटेंड करेंगे, ये आपकी हाइट हो जाएगी। मेक सेंस? अगर आप AC को बेस लेते हैं, अगर आप AC को बेस कंसिडर करते हैं तो हाइट इसकी क्या होगी? यू विल एक्सटेंड दिस। रिमेंबर हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होती है, राइट? अगर आप ये बेस ले रहे हैं AC, तो हाइट क्या होगी इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन के अंदर। अब इस डायरेक्शन के अंदर वो जहां पे B को मीट करेगी वहां पे तक आपकी हाइट होगी। तो B को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं इस साइड के ऊपर इस तरह से। और ये जो येलो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, एक मिनट, ये जो हाईलाइट किया, दिस इज योर हाइट, ये आपकी हाइट है, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस। आप इन दोनों की वैल्यूज निकाल लें एंड दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाई? बिकॉज वी नो द कोऑर्डिनेट्स। ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, दिस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। AC लेंथ कितनी हो जाएगी? आप यहां पे देख रहे हैं, AC स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट? ऊपर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, उसमें से आपने माइनस कर दिया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, व्हाट यू गेट? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके AC की लेंथ होगी। इसी तरह से ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक, लेट्स कॉल दिस पॉइंट समथिंग, इस पॉइंट को आप x कह लें। BX इज योर हाइट। BX कैसे आएगा? दिस इज माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, x किस लेवल पे है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट गिव्स यू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दैट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। डज एवरीवन गेट दिस? ये लेवल कितना था? माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कहाँ तक जा रहा है ये? स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक। तो लेंथ निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से आपने माइनस कर दिया माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट गिव्स यू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और उससे लेफ्ट साइड पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ऐड करके 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाए। ठीक है, अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा लें, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Area of the triangle ABC, that is half into base, which is 2 square root of 2 into height, that's 5 square root of 2. It will turn out to be 10. Yeah. Okay, let's have a look at this. We have to first, in the first part, find the two square roots of this complex number, minus 3 plus 4 iota, giving our answer in the form x plus y iota. ये आप लोगों को पता है, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। आप सिर्फ क्या करेंगे, x प्लस वाई आयोटा होल स्क्वायर्ड इक्वल्स माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम दैट। सॉल्व करके दो आपके पास स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, एक्सप्रेस z इन द फॉर्म x प्लस वाई आयोटा। इट्स सिंपल डिवीजन, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, विल गेट अ वैल्यू फॉर z। व्हाट्स दैट? 1/5। ये क्या थी वैल्यू? 1/5 plus 7/5 iota। ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट यू हैव। ओके, ये आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया होगा। सेकंड पार्ट में उसने स्केच करने के लिए कहा है। थर्ड पार्ट में वो कहता है, स्टेट एन इक्वेशन रिलेटिंग द लेंथ्स ऑफ OA, OB एंड OC। व्हाट आर द पॉइंट्स A, B एंड C? A is minus 1 plus 3 iota, जो ऊपर लिखा हुआ था वहां पे। B is 2 plus iota, वो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा था यहाँ पे। एंड Z is the result that you get when you divide those two complex numbers। उनको डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, that is Z। ओके, अब आपको इस पे मॉडुलस फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज देखें इट्स ओनली 1 मार्क, सो इसमें ज़्यादा खास वर्किंग होनी भी नहीं चाहिए। OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
OA represents modulus of -1 plus 3 iota. ये complex number है, इसका distance from the origin, that's the modulus of this number, right? So OA, you can say this is the modulus of -1 plus 3 iota. What about OB? OB is the modulus of the second number, that is 2 plus iota. And OC is the modulus of Z. Z क्या represent कर रहा है? Z is equal to -1 plus 3 iota. Z is -1 plus 3 iota divided by 2 plus iota. This is how Z is defined. ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके मॉडुलस के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होगा? मॉडुलस ऑफ Z, that is going to be equal to modulus of -1 plus 3 iota divided by modulus of 2 plus iota. जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड होते हैं, उनके मॉडुलस भी डिवाइड हो जाते हैं, मॉडुलस के दरमियान में वही रिलेशनशिप है. सो व्हाट Z now? Modulus of Z, modulus of Z is OC. OC equals modulus of -1 plus 3 iota, that's OA, divided by the modulus of 2 plus iota, that is OB. This is the relationship between OC, OA and OB. वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं, उनके मॉडुलस के दरमियान में भी वही सेम रिलेशनशिप है. वी डिस्कस दिस बिफोर, हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा था. So when two complex numbers multiply, their moduli also multiply. When two complex numbers are divided, their moduli are also divided. Arguments के दरमियान में डिफरेंट होता था, मल्टीप्लाई करते थे आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड करते थे आर्ग्यूमेंट्स सब्ट्रैक्ट होते थे. That's all you've got to do in this part. This is question number 1 part 3. अभी आपको सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नोट्स. आपको सिर्फ ये लिखना है, you just need to write this thing. OC equals OA over OB. आप बस उसको सोच के कि आपको नजर आ रहा है कि Z और उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप उनके मॉडुलाई में होगा, तो बस आप उसको इस तरह से लिख देंगे एंड दैट्स इट. उसकी कोई वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं. Alright, so we have this equation and it has one real root and two complex roots. First of all, it says, showing your working, verify that this is one of the complex roots. How do you do this? Just input this in the equation. इसके अंदर input करेंगे, simplify करेंगे, 0 equals 0 आ जाएगा. ये कर सकते हैं सब लोग? First part, this was one of the first few questions that we did. In fact, मेरे ख्याल है हमने एक question exactly ये किया हुआ है. So we did something very, yeah, we did 14 actually. So 14 का first part हमने पहले किया हुआ है. It was one of the first few questions that we did. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. Let me just write it down here. Part 1. Now let's do the other parts of question number 14. So there's one other part, that's part B. Let's have a look at this now. Okay, on the sketch of an argand diagram, show the point representing the complex number 1 plus square root of 3 iota. On the same diagram, shade the region whose points represent the complex numbers Z which satisfy both of these inequalities. एक ये inequality है, एक ये inequality है. ठीक है? Okay, let's draw an argand diagram first and represent that point 1 plus square root of 3 iota. सबसे पहले तो वो कर लेते हैं. So let's say we have an argand diagram looking like this. This is the real axis, this is the imaginary axis. 0, 1, 2, 1, 2. So first of all, we have to represent this complex number 1 plus square root of 3 iota. 1 on the real axis, square root of 3 on the vertical axis. Square root of 3 क्या होता है? It's 1.4 something. बस आपने approximately इसकी position mark कर देनी है. You don't have to be very accurate there. Let's say वो number कहीं पे यहाँ पे आ रहा है. ठीक है? This is 1 plus square root of 3 iota. सबसे पहले तो आपने ये point mark कर दिया. Okay? Can all of you please take out your printed worksheets? वैसे? You should have your questions with you in front of you.
यहाँ से आपको हर वक्त नज़र नहीं आ रहे होते. प्रिंटेड वर्कशीट देने का फ़ायदा ये है कि आप उसको साथ अपने सामने रखें. ओके, तो हमने पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये दो रीजन्स रिप्रेजेंट करने हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let me write down the first inequality, that is z minus iota square root of 3 that is less than or equal to 1. Now what's the first thing that we do? We convert it to the standard form, z minus something. Okay, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So it becomes z minus 1 plus iota square root of 3 that is less than or equal to 1. That's what it is. ठीक है, इसका क्या मतलब है? Now you don't have to write it down necessarily, बस आप दिमाग में सोचने इसका क्या मतलब है. Distance of z from what? From 1 plus square root of 3 iota that is less than or equal to 1. So इस point से you should be 1 unit or less away. Okay, तो क्या होगा इसका locus क्या होगा? Circle. 1 point से fixed distance वो क्या locus होता है? Circle. 1 point पे सर्कल बनता है, 2 points पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 points के इक्वल जब होते हैं डिस्टेंस के ऊपर. So we have a circle here. Let's draw a circle radius 1 और उसके अंदर आप कहीं भी हो सकते हो. ओके, रेडियस 1 का यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं. With the center. Okay, let's say this is what the circle looks like. It has radius 1. Now you can be anywhere inside this circle. आप क्या करेंगे? इस सर्कल को लेबल कर देंगे. इसकी लेंथ कितनी है? 1 है. या तो आपको ग्राफ पे नजर आ रहा हो क्लियरली ये रेडियस आपको पता चल रहा है दिस इज 1, या फिर आप इसको लेबल कर दें. ओके, दिस इज 1 यूनिट. Now you can be anywhere inside this circle. That's what the first inequality says, because the distance from this point should be less than or equal to 1. इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी आपने शेड नहीं करना. Because we also have another inequality. You just have to remember circle के अंदर होना है आप. That's one condition. There's another condition, and that is argument of z should be less than or equal to pi over 3. That's the other condition. Let me just write that here as well. Argument of z is less than or equal to 1 over 3 pi. So basically यहाँ पे कोई और पॉइंट से नहीं है, ओरिजिन से ही बात हो रही है. ओरिजिन से जो आर्गुमेंट है, जो एंगल है, that should be less than or equal to pi over 3. ओरिजिन से आप एक लाइन बना दें विथ एट एन एंगल ऑफ पाई ओवर 3. पाई ओवर 3 कितना होता है डिग्रीज में? टू हेल्प यू थिंक, 60 डिग्रीज. तो अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्रीज की लाइन बना दें आप. ठीक है, बट नाउ यू शुड एक्चुअली बी केयरफुल एंड यू शुड बी अवेयर कि 60 डिग्रीज वाली लाइन कहाँ से पास करेगी? यहाँ से नीचे से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी, ऊपर से पास करेगी. रिमेंबर tan 60 डिग्रीज क्या होता है? tan 60 क्या होता है? tan 60 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3. tan 60 डिग्रीज या tan pi over 3 दैट इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 3. यानी कि tan क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, बेस 1 है. दिस इज सॉर्ट ऑफ द रेशियो. तो 1 यूनिट आप हॉरिजॉन्टली जाते हो तो कितना वर्टिकली जाते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स. तो ये जो लाइन आपकी बनेगी, इट विल एक्चुअली पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर से पास करेगी. ओके, देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 और रियल एक्सिस पे 1 है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट की क्या है? 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो अगर पाई ओवर 3 एंगल के ऊपर लाइन बन रही है तो आप देखिए 1 यूनिट चेंज इन एक्स एक्सिस मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट चेंज इन वाई एक्सिस इफ द एंगल इज पाई ओवर 3. Does that make sense? Because ये आपकी एक ट्रायंगल बन रही है, इसके ऊपर ये साइड अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो ये 1 होनी चाहिए. इफ़ योर एंगल इज पाई ओवर 6 तो ये इस पॉइंट से पास करना ज़रूरी है. ओके, सो दिस इज हाउ यू वुड मेक इट. सेंटर से पास करेगी, एक मिनट रखें, सेंटर से पास करेगी. अब उसने क्या कहा है? आर्गुमेंट इज लेस देन दिस
तो इस लाइन के कहाँ पर होंगे? इस लाइन के नीचे होंगे. सो दिस एंगल इज पाई ओवर 3. इस लाइन के नीचे होंगे. Inside the circle and below this line, what does that mean? That's this part of the circle, the semicircle below this line. This is going to be the region that satisfies both inequalities together. Okay? Yes, there was a question somewhere. किस पॉइंट का? वो भी कर सकते हैं. सो दैट्स अ गुड पॉइंट एज वेल. आपको पता है कि इस पॉइंट पे एंगल क्या बन रहा है? इस पॉइंट पे एंगल देख लें क्या बन रहा है. इसका आर्गुमेंट क्या है? इसका आर्गुमेंट भी पाई ओवर 3 है इस पॉइंट का, और जो उसने आपको कहा हुआ है पाई ओवर 3 वो भी उसके इक्वल है. तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट के थ्रू पास करेगा. अगर आपका एंगल उससे ज़्यादा होता तो उसके ऊपर से जाता, एंगल कम होता तो उससे नीचे से जाता. ओके, सो दिस इज हाउ यू वुड डू इट. सर्कल के अंदर और उस लाइन से नीचे. ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो? अच्छा, आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक एट द मार्किंग स्कीम फॉर दिस, कि उसने इसके मार्क्स उसने काटे हुए हैं या नहीं काटे हुए. या वो तो है, लेकिन जो ड्रॉ करने के लिए उसने कहा है उसने इसके मार्क काटा हुआ है सेंटर से पास करने के नहीं कहा. बट यू शुड एक्चुअली ड्रॉ इट इफ यू एबल टू फिगर दिस आउट. यू शुड ड्रॉ इट फ्रॉम पासिंग थ्रू द सेंटर. दैट्स मोर एक्यूरेट. ओके, बट हो सकता है उसने मार्क इसका ना काटा हो. नो, इसका काटा हुआ है. तो एक मार्क इसका देखें यहाँ पर है. 4th पॉइंट देखें. शो दैट द लाइन फ्रॉम ओरिजिन पासिंग, शो अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल से पास करनी चाहिए. अगर सेंटर से नहीं पास करेगा यू लूज दैट 1 मार्क. 1 मार्क उसका कट जाएगा. All right, the complex number w is defined by -1 plus iota. Okay, this is a complex number w. In the first part it says find the modulus and argument of w square and w cube. How do you do that? Find the modulus of w. w square के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. w क्यूब के लिए उसको सॉरी 2 से मल्टीप्लाई उसको स्क्वायर कर दें, और w क्यूब के लिए उसको क्यूब कर दें. ओके, तो -1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज द मॉडुलस ऑफ w. ठीक है, ये आ गया. अब w स्क्वायर जो है उसका मॉडुलस क्या होगा? If you think about it, w square is w times w. Okay, w into w का मॉडुलस. अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, w and w. The moduli are also going to multiply. तो मॉडुलस ऑफ w जो आपके पास है उसको बस आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दोगे, and that's the same thing as saying मॉडुलस ऑफ w का स्क्वायर. Okay, or you can just directly say this, w square का मॉडुलस is the same thing as मॉडुलस ऑफ w का होल स्क्वायर, because वो मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है essentially. Okay, अब इसके अंदर इनपुट कर दें. स्क्वायर रूट ऑफ 2 था वो, so this will turn out to be square root of 2 whole squared which is 2. उसने कहा है show your working, so you should show at least this step, square root of 2 का whole square and then write 2. ठीक है, और ये भी आपने इसकी वर्किंग भी शो करनी है, मॉडुलस ऑफ w की वर्किंग वो भी आपने दिखानी है. ठीक है, अच्छा ये आ गया. देन यू हैव मॉडुलस ऑफ w cube. Now with this using the same logic, that's the same thing as saying modulus of w का cube. So that will be square root of 2 whole cube, and that turns out to be 2 times square root of 2. This is the modulus of w cube. Make sense? अच्छा उसने argument भी कहा है, sorry उसने argument भी कहा था, I missed that. Modulus and argument, so you need both of them. Argument of w square वो क्या होगा? Argument of w plus the argument of w.
अब आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्या ऊपर निकाल लेते हैं पहले. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अपनी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है. सो लेट्स फाइंड द बेसिक एंगल फर्स्ट. tan alpha equals 1/1, राइट. द वर्टिकल पार्ट इज 1 एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज 1. यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी. दैट विल बी द बेसिक एंगल व्हिच इज π/4. व्हाट्स द आर्गुमेंट देन? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, रिमेंबर. So in the second quadrant like this, we have found this basic angle. This is π/4. So what's the argument? Positive x-axis यहाँ पे जाने. That's going to be pi minus π/4, which is 3π/4. ये आपका argument. ठीक है? This is the argument of W. What about the argument of W square? It will be argument of W plus argument of W, and that turns out to be 3π/4 plus 3π/4, and that is 3π/2. Now that value is correct, but remember हमने क्या कहा था? argument हम किस interval के अंदर लिखते हैं normally? Negative pi to positive pi. Is this in that interval? 3π/2 इस इंटरवल के अंदर नहीं है. तो आप देख लें ये आता कहाँ पर है, किस पोजीशन के ऊपर आता है. 3π/2. Where is this angle going to be? देखें 3π/2. This is pi and then this is 3π/2. ये आपकी लाइन है. इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है 3π/2. ओके. तो इसका उस इंटरवल के अंदर क्या एंगल बनेगा? नेगेटिव साइड से चले जाए. इट्स द सेम थिंग एज सेइंग -π/2. दैट्स द आर्गुमेंट ऑफ W square. इज दैट ओके? ये क्लियर है? आई थिंक मोस्ट लाइकली उसने 3π/2 भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया होगा. वैसे दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस इंटरवल थिंग. लेट मी जस्ट कंफर्म दैट एज वेल. ये कौन सा क्वेश्चन है? 20 part 2. Again, just my guess कि उसने ये भी एक्सेप्ट किया होगा. Let's check. 20 part 1. Yeah. So इसे argument of W square, it's -π/2 और 3π/2. उसने दोनों एक्सेप्ट किए हुए हैं. ठीक है. Although उसकी इंस्ट्रक्शन ये होती है कि -π से π तक आप that's better, but this is acceptable as well. आप 3π/2 भी लिख देते, that would have been acceptable in this case. अच्छा, ये आ गया आपके पास argument of W square. Let's move on. Now you need argument of W cube. वो क्या हो जाएगा? Argument of W 3 times. इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर argument of W plus argument of W plus argument of W, because W is being multiplied 3 times. वो तीनों दफा ऐड हो जाएंगे इसके arguments. What does this turn out to be? 3π/2, no, 3π/4 plus 3π/4 plus 3π/4. What do we get from this? 9π/4. This is what you get when you add all of them up. अब 9π/4 आपको कहाँ पर आ रहा है? If you think about it, 0 से स्टार्ट करें. π/2, pi, 3π/2, 2π. उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर. वो यहाँ पर कहीं जाके है. दिस इज 9π/4. ओके. तो इसको एंगल आप किस तरह से लिखोगे? तो 2π पूरा एक सर्कल तो कंप्लीट हो गया. उसके बाद फिर आपका कुछ एडिशनल है. हाउ मच इज दैट? दिस इज π/4. अब इसमें से 2π माइनस कर दें. यू गेट π/4 फॉर दैट. इसमें π/4 ही लिखना है आपको, बिकॉज ये तो पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस आ गए. सो वो 2π से ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो दिस इज योर आर्गुमेंट फॉर W cube. Now let's look at the second part. The points in an argand diagram representing W and W square are the ends of a diameter of a circle. You have to write down an equation of a circle in this form. अच्छा, सबसे पहले
Let's represent those points here on the argand diagram. This is the imaginary part, this is the real part. W point kya tha? It was -1 plus iota. So let's say this is 1, 0, -1. W is going to be right here. ये आपका W point आ गया. What about W square? How do we plot that? W square का आपको मॉडुलस पता है कितना है? 2 यूनिट्स. यही ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स. एंगल कितना है? -π/2. एंगल इज -π/2. इसका मतलब क्या होगा? आप यहां पे इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट आ रहा होगा, इस लाइन के ऊपर. मेक सेंस? आर्गुमेंट -π/2 है, मॉडुलस 2 है. इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से 2 के डिस्टेंस के ऊपर, तो वो पॉइंट कहां पर होएगा? -2 के ऊपर. दिस इज वेयर द पॉइंट इज गोइंग टू बी. यहां पे वो पॉइंट आ रहा होगा, इस जगह पे. ठीक है. और यू कुड ऑल्सो जस्ट इवेल्युएट W square by multiplying W by itself. आप वो भी कर सकते थे. If you're more comfortable with that, that's also fine. W equals -1 plus iota. ये आपको पता है. तो आप क्या करें? आप W square इवेल्युएट कर लें कार्टेशियन फॉर्म के अंदर. W square will be -1 plus iota का होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर plus 2 into -1 into iota plus iota square. That gives you 1 -2 iota -1, which is -2 iota. -2 iota आप प्लॉट कर देना. ठीक है. दिस इज W square. यहां तक क्लियर है? अब उसने कहा है there is a circle that has this diameter. ये उस सर्कल का डायमीटर है. ठीक है. इस सर्कल की इक्वेशन आपने बतानी है इस फॉर्म के अंदर z minus a plus b iota equals k. So W and W square are the ends of the diameter. इक्वेशन आपको किस फॉर्म में लिखनी है? z minus a plus b iota modulus that equals k. Okay. Now how is this circle going to look like? Let me just draw something in rough. यहाँ पे exact तो नहीं बनेगा. Okay, I'll just try exact if I can. Okay, this is what the circle might look like. ठीक है. ये इसका डायमीटर है. ये डायमीटर है. अब ना इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखनी है. Now how do we understand this statement? इसको वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करें आप? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम a plus b iota that equals k. ये आपके पास सर्कल का लोकस बना है. अब देखिए, आपको लोकस पहले से पता है और आपको वापस वो इक्वेशन लिखनी है. z represents all the points on this circle. इसका डिस्टेंस from a plus b iota from some point is a constant. ये पॉइंट क्या होता था? सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल किधर है? इट्स राइट हियर, द मिड पॉइंट ऑफ दोस 2 पॉइंट्स. डायमीटर था ना, इसका मिड पॉइंट में आपका सेंटर होएगा. इस सर्कल का, इस डायमीटर का मिड पॉइंट आपका सेंटर होएगा. ठीक है. दिस पॉइंट हियर. के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ द सर्कल. तो उसका रेडियस फिगर आउट कर लेंगे. सो के रिप्रेजेंट्स द रेडियस and this represents the center of the circle.
तो एक तो आपको सेंटर चाहिए और एक आपको रेडियस चाहिए. Once you have those two things, you can write down the equation in this form. How do you find the center? Midpoint का फॉर्मूला लगा लें, इसको कोऑर्डिनेट्स की तरह ट्रीट कर लें, right? That's going to be easier. So ये क्या पॉइंट है? This is 0, -2 and the other one is -1 and 1. इसका मिड पॉइंट किधर होएगा? Let's call this point C या C कह लें. C के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? -1 + 0 over 2 and 1 - 2 over 2. What do we get from this? -1 over 2 and -1 over 2. इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखें वो क्या होएगा? -1 over 2 -1 over 2 iota. This is the center of the circle. ठीक है, ये एक चीज होगी. Now you want the radius. इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस देख लें, डायमीटर निकाल लें, उसको हाफ कर दें. So that's your choice. Let's find the diameter. इन पॉइंट्स को उसने कोई नाम दिया हुआ है? No. Okay. Let's find the distance between those 2 points. Diameter find कर लें. Just use distance formula. Square root of 0 minus 1, so that's 0 plus 1 whole square, plus y2 minus y1, that's -2 minus 1, -2 minus 1 whole squared. What do we get from this? Square root of 10. Distance आपका आ गया square root of 10. Diameter. This is the diameter. Radius क्या हो जाएगा? या एक ही बात है, सेंटर से निकालने से निकाले, वो बस फ्रैक्शंस में आ रहे हैं पॉइंट्स, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान है. दैट्स योर चॉइस. स्क्वायर रूट ऑफ 10 over 2, ये आपका रेडियस आ गया. ठीक है, तब उस फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे? उसने क्या कहा था? उस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म के अंदर आपने इक्वेशन लिखनी है. सो द फॉर्म इज z minus a plus b iota modulus of this equals k. Just input those values here. Z minus -1 over 2 -1 over 2 iota. Modulus of this equals square root of 10 over 2. This is the equation of the circle in this form. तो यहाँ पे उसने आपको लोकस बताया हुआ था और आपको वापस उस फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखनी थी, but the logic remains the same. राइट साइड पे जो नंबर है वो रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो z माइनस के बाद जो नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. Okay, the complex number w is defined by this 22 plus 4 iota divided by 2 minus iota whole square. First of all, it says without using a calculator show that w equals 2 plus 4 iota. ये तो आप लोग कर लेंगे, right? First part हो जाएगा. Take a minute and do it quickly. First part जल्दी से करें. Okay, so you would just simplify the denominator. उसको square को evaluate कर लें, simplify करें, conjugate से multiply divide कर दें. You should be getting 2 plus 4 iota at the end. ठीक है, first part हो जाएगा ना सबसे, right? Okay, let's do the second part. इसके बाद वो क्या कहते हैं? Part 2. वालेकुम अस्सलाम. Part 2. So it's given that p is a real number such that argument of w plus p is between pi over 4 and 3 pi over 4. We have to find the set of values of the number p. Okay. So p is a real number. That means it does not have any imaginary component. ये आर्गन डायग्राम के ऊपर रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा. दैट्स वन थिंग. And we're given that the argument of w plus p is between these two numbers. आपने p की possible values figure out करनी है. Now, it's going to be helpful if you just draw a rough argand diagram to understand the situation better. और उस पर mark कर लें ये points कहाँ पर आपके पास आ गए. ठीक है? So let's draw an argand diagram.
दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट. क्योंकि वो आर्गुमेंट के बारे में उसने कुछ कहा है, तो अगर डायग्राम बना लेंगे उससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. वी गॉट 2 + 4 iota. So 4 is here. So this is 2, 2. This is one point that you have. 2 + 4 iota. ये पॉइंट W है. ठीक है. Okay. Argument of W plus P, that should be between pi/4 and 3 pi/4, and you know that W is equal to 2 + 4 iota. अच्छा, इस पॉइंट W का आर्गुमेंट क्या है? इफ यू जस्ट कैलकुलेट दैट क्विकली, W का आर्गुमेंट आपके पास क्या आता है? इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी tan inverse of 4/2. Can anyone tell me what that is? 1.107. Okay. And the number is 2 + 4 iota. Now what you're doing is you're adding P to this number. W में आप P add कर रहे हैं. P is a real number. P is a real number. So basically ये जो 2 है, इस 2 के साथ कुछ ऐड हो जाएगा, राइट? 2 में कुछ ऐड हो जाएगा, रियल पार्ट में कुछ ऐड हो जाएगा. हाउ इज दिस पॉइंट गोइंग टू मूव ग्राफिकली? ग्राफ पे आपका ये पॉइंट किस साइड पर जाएगा? अगर आप रियल पार्ट में कोई चीज ऐड करते हो, या अगर P की वैल्यू नेगेटिव है, अगर आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हो, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? हॉरिजॉन्टली, राइट? हॉरिजॉन्टली राइट लेफ्ट में मूव कर रहा होगा. वर्टिकल पार्ट चेंज नहीं हो रहा, इमेजिनरी पार्ट चेंज नहीं हो रहा. सो 4 इज कांस्टेंट, 4 iota वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा. द रीजन है, उसने कहा है कि P इज अ रियल नंबर. P इज अ रियल नंबर, सो ओनली द रियल पार्ट इज गोइंग टू चेंज. जब आप इसमें W में P ऐड करेंगे, सिर्फ रियल पार्ट चेंज हो रहा होगा. सो द पॉइंट कैन मूव हॉरिजॉन्टली लाइक दिस. इस तरह से आपका पॉइंट हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं. ओके. नाउ इट सेज द आर्गुमेंट ऑफ दैट नंबर शुड बी between pi/4 and 3 pi/4. pi/4 किधर होता है? pi/4 is 45 degrees, so that is going to be in the first quadrant like this. इस तरह की लाइन होगी. 45 डिग्रीज की जब लाइन होती है, सारे कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर इक्वल होते हैं. सो दिस इज 1 1 2 2 3 3 4 4, राइट? सो दिस इज द लाइन दैट वी हैव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसके दरम्यान में और किसके दरम्यान में? सो दिस पॉइंट इज 4. 3 pi/4, 3 pi/4 इज 135 डिग्रीज. वो 45 डिग्रीज की ही लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी बन रही होगी एसेंशली, समथिंग लाइक दिस. एंड अगेन दिस इज -1, दिस इज -2, -3, -4. ये यहाँ पे किस पॉइंट से पास कर रहा होगा? -4 और 4 से, और यहाँ पे इस साइड पे 4 और 4 से. दिस एंगल इज pi/4 and this angle is 3 pi/4. So the complex number has to be between these two lines. इसके दरमियान में कहीं पे हो सकता है इस रीजन के अंदर. So what are the possible values of P then? P की वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा, it turns out हमें इस एंगल की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी. ये जो हमने यहाँ पे आर्गूमेंट निकाला, आर्गूमेंट W इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. आप राइट लेफ्ट मूव करना है तो आप बेसिक देख सकते हैं कि W इनिशियली क्या है? 2 + 4 iota. राइट साइड, सिंस यू कैन ओनली मूव हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, राइट साइड पे आप कहाँ तक जा सकते हैं? यू कैन ओनली गो अंटिल 4. लेफ्ट साइड पे कहाँ जा सकते हैं? यू कैन ओनली गो अंटिल -4. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2. On one side you can go to -4 and on the other side you can go to
4, इन दोनों नंबर्स के दरमियान में रहना है आपने, ठीक है। तो 2 में आप मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं? 2 ऐड कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? -6। तो जब p का इंटरवल होगा, p आप कहेंगे p कैन बी एनीथिंग बिटवीन -6 and +2. So this argument for w was not really needed. वैसे ग्राफ से देख के हमने सोच लिया कि राइट साइड पे यू कैन मूव 2 units, लेफ्ट साइड पे यू कैन मूव 6 units. So p can be any value between -6 and 2. Another way to think about this could be, मतलब अगर शायद वो थोड़ा सा आसान लगे आपको, हम p को कोई नंबर एज्यूम कर लें. p is a real number, right? तो p की वैल्यू हम अगर p ले लें, so p is exactly a real number, तो w plus p क्या होएगा? w plus p, ये रिजल्ट क्या आता है आपके पास? 2 plus p plus 4 iota. This is actually the complex number that we're talking about. 2 plus p real part है इसका, 4 iota इसका imaginary part. तो हम ये कह रहे हैं 2 plus p की वैल्यू किसके दरमियान में हो सकती है? -4 और 4 के दरमियान में. It has to be between these two values. जो रियल पार्ट है तो आपको वहां पे नजर आ रहा है -4 और 4 के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है. So you can say 2 plus p is between -4 and 4. अब 2 को माइनस करते हैं दोनों तीनों एक्सप्रेशन से, you get p between -4 -2 and 4 -2, and that gives you p between -6 and +2. This could be another way to think about this, but हम यहाँ पे खुद से logically सोच रहे हैं. आप उसको p plus 2 assume कर लेते हैं और p plus 2 कहते हैं, that should be between -4 and 4, and that gives you the range for p as well. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये है कि स्टैंडर्ड मेथड्स के अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको उसी क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है कि क्या करना है इसके अंदर, राइट. सो दिस इज वन ऑफ दोस टाइप्स. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. इट आल्सो लुक्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड जस्ट बाय लुकिंग एट इट. देखते हैं क्या इसमें. द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट w is denoted by w star. The complex numbers w and w conjugate are represented in an Argand diagram by the points s and t respectively. Find the form z minus a equals k, the equation of the circle passing through s, t and the origin. Again, it's going to help if you draw an Argand diagram. एक sketch बना लें, उसे सोचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. Part 3. Let's draw an Argand diagram. This is the real part, this is the imaginary part. Okay, w and w star, let's write those 2 points. W was 4 plus 2 iota, so w conjugate would be 4 minus 2 iota. Is it the other way around? 2 plus 4 iota. Will it do about my 4? 2 plus 4 iota and then 2 minus 4 iota. ये आपके पॉइंट्स आ गए. 0, 4, 2, 2, 4, -4. 2 plus 4 iota is this point, and 2 minus 4 iota is this point. This is w, this is w star. एक ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास. उसको उसने s और t से रिप्रेजेंट किया. So you can say this is point s and this is the point t. और रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं w and w star. अच्छा, st पॉइंट्स आ गए. And the origin, the third point is the origin. We have to find the equation of the circle that passes through s, t and the origin. इन तीनों पॉइंट से पास करना चाहिए. So this is our origin. Okay. इन तीनों पॉइंट से सर्कल के पास करना चाहिए. आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उस सर्कल की किस फॉर्म के अंदर? z minus a modulus equals k. z minus a modulus equals k. इस फॉर्म के अंदर आपने इक्वेशन फिगर आउट करनी, ठीक है. Now you can roughly draw that circle. So let's say it looks something like this. आपकी आर्क इधर बनेगी, another arc here,
एंड देन यू हैव द रेस्ट ऑफ द सर्कल समवेयर. इस तरह का आपका कोई सर्कल होगा. ठीक है. अब इस फॉर्म के लिए रिमेंबर व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट एंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट. इन दोनों का क्या मतलब होता है? वैसे एक्चुअली मैं आपको ये लेट मी गो बैक टू द पॉइंट वी डिस्कस्ड लोसाई. इसी तरह से ड्रॉ करते थे ना सर्कल. z माइनस समथिंग दैट इक्वल्स a constant. R used to be the radius and this was the center of the circle. So basically if you have the center and if you have the radius, तो इस मॉडुलस वाली फॉर्म के अंदर आपने बस ये वैल्यूज इनपुट करनी है. एक ही जगह पे सेंटर डाल देना कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म के अंदर और R की जगह पे रेडियस डाल देना. That's all you've got to do. Okay? Now let's go back there. इसी फॉर्म में उसने इक्वेशन आपसे मांगी है. Z minus A equals K. A here is the center and K is the radius. So now the problem is we need to find the radius of the circle and the center of the circle. Once we have those two things, बस यहाँ पे input कर देंगे और आपके पास equation आ जाएगी. तो आपको center और radius figure out करने किसी तरह से. So this is a circle now. इसका कहीं पे center होगा. हमें वो center figure out करना है और radius find करना है. What can we do now? Let's assume the center is somewhere here. कहीं पे भी आप इसको assume कर लें. Let's say यहाँ पे कहीं हो सकता है. This is the center. Now there are two problems. We have to find the coordinates of this point and also the radius. Let's make a triangle like this. अगर हम इस तरह से एक triangle बना लें. So it's not a straight line. ST is a chord, right? ये उसका मिड पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट है. दिस इज द मिड पॉइंट. इस मिड पॉइंट पे अगर एक लाइन जा रही है इस तरह से सेंटर से आ रही है जो रिमेंबर ये एंगल क्या होता था? इट्स 90 डिग्रीज. वो मिड पॉइंट से काट करेगा. एंगल इज गोइंग टू बी हाफ. एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. आपको वैसे भी नजर आ रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है. सो द एंगल इज 90 डिग्रीज. वी गॉट अ ट्रायंगल लाइक दिस. अब इस ट्रायंगल से हमें किसी तरह से फिगर आउट करना है कि रेडियस क्या है और ये पॉइंट क्या है. ओके. नाउ लेट्स कॉल दिस R. सो वी नो दिस एंगल नाउ. वी नो दिस साइड नाउ. एक साइड है. एक ही एंगल है. वी नीड वन मोर थिंग. हमारे पास वर्टिकल साइड है दैट इज 4. ये भी हमें पता है. वर्टिकल लेंथ कितनी है इस ट्रायंगल की, ऊपर वाली ट्रायंगल की? That's 4. If you look at this triangle, इस triangle को देख रहे हैं. इस triangle के अंदर we've got the radius, we've got this perpendicular. Radius की value तो नहीं, radius आपको figure out करना है. ये 90 degrees है. Is there anything else that we can also figure out here? कुछ और हमें पता है इस triangle के अंदर? कोई angle figure out कर सकते हैं किसी तरह से? We know the argument of this point. ये एंगल फिगर आउट कर सकते हैं हम. ये वाला एंगल. व्हाट्स दिस एंगल? 4 और 2. ये आपको दो लेंस पता है यहाँ पे. आप ये एंगल फिगर आउट कर सकते हैं. लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा. हाउ डू यू फिगर दिस आउट? दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4/2. बेसिकली वो आर्गुमेंट ऑफ W है. tan of theta is equal to 4/2. Theta equals what? 1.137. इसको डेसिमल्स की बजाय इसको tan इनवर्स की फॉर्म में रख लें. दैट्स चॉइस. क्या था 1. चलो लेट्स write like this. This is 1.107. Once we know this angle, we can also figure out this angle. ये एंगल भी पता चल जाएगा, राइट? ये पहले कैसे निकाल सकते थे? और क्या है? और नहीं है ना कुछ? और कुछ नहीं है, सिर्फ 4 है. और नहीं पता हमें कुछ. रेडियस वैसे कैसे निकाल सकते हैं?
SC is equal to TC and then डिस्टेंस दोनों का सेम होगा ना, correct. उनको इक्वेट करके सीधे लाइक डिस्टेंस नहीं कराएगा, रेडियस ही होगा। लेकिन किसको इक्वेट करें, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है ना आपके पास, एक सिर्फ एक आपको ये लेंथ पता है, सिर्फ ये लेंथ पता है, ये एंगल पता है, व्हाट एल्स डू यू नो, और तो कुछ भी नहीं पता आपको। ये एंगल के बगैर तो नहीं कर सकते ना किसी तरह से, ये एंगल तो आपको चाहिए होगा। सो दिस एंगल इज थीटा। अब ये जब थीटा आ गया, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। दिस इज द एंगल सी, दिस एंगल इज गोइंग टू बी ये एंगल क्या होगा, oh yeah, so what we can actually do is this is an isosceles triangle. Does everyone get that? ये तीनों रेडियस है, ये देखें, ये आर्क है ना इस सर्कल की, दिस इज एन आर्क, दिस इज द सेंटर, सेंटर से आपकी एक आर्क आ रही है। सो दीज येलो हाईलाइटेड लाइंस दे आर ऑल इक्वल टू ईच अदर, राइट, ये सारी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल क्या होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। इफ यू नो बोथ ऑफ दोज एंगल्स वी कैन फाइंड दिस एंगल सी एज वेल। ओके, मेक सेंस? सो सी आ गया, एंगल SCO is going to be pi minus 2 into 1.107। टोटल एंगल ट्राइंगल के अंदर कितने होते हैं, पाई रेडियंस, उसमें से आपने एक दफ़ा ये माइनस कर दिया, एक दफ़ा ये माइनस कर दिया, सो 2 times 1.107 आपने माइनस किया, आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दैट, 0.9 2759, so it's say 276. Okay, so now we've got that angle। जब वो एंगल आ गया अब हम रेडियस निकाल सकते हैं। we've got this length, that's 4, we know this angle now, वो एंगल कितना आ गया, 0.9276। we can find the value of r from here, this is perpendicular, this is hypotenuse, sine of 0.9276 that equals 4 over r। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। What's r? रेडियस क्या आता है, सॉरी 4.99, या सो एग्जैक्ट वैल्यू इसके अगर आप यूज करते हैं दिस वुड हैव बीन 5, सो रेडियस टर्न्स आउट टू बी 5। ठीक है, अगर रेडियस 5 आ गया तो इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो सेंटर है, OC is also the radius, OC is also the radius, क्योंकि रेडियस 5 है तो इसके भी x कोऑर्डिनेट भी 5 होएगा, so this is also going to be 5, this point is going to be 5 as well। ठीक है, तो point C is 50, या complex number के form में it's 5 plus 0 iota or just 5। So what's the equation then? Equation is modulus of z minus 5 that equals 5। This is the equation of the circle because radius is 5 and the center is also 5। Okay, so this is one way to do it जो हमने किया यहाँ पे। You could make it much shorter by recognizing this। मैं इसको remove कर रहा हूँ, आप इसको note कर लिया तो that's good, but you would actually make it quicker। किस तरह से, we know that this length is r, this length is r, what about this length, टोटल r है, उसमें से आपने 2 माइनस कर दिया because we know this point as well, this point is 2, so ये लेंथ इस पॉइंट तक कितनी हो जाएगी, r minus 2। मेक सेंस? हम ये वाली ट्राइंगल देख रहे हैं, दिस ट्राइंगल,
इस ट्राइंगल के अंदर we know the hypotenuse is r, perpendicular is 4, the base is r minus 2. We could just use Pythagoras here. So that would have been much quicker. वो angles find करने के बजाय हम ये कर सकते थे r square equals 4 square plus r minus 2 whole squared. R square equals 16 plus r square plus 4r, no, minus 2, 4r plus 4. R square and r square get cancelled and we have 4r equals 20, r equals 5. Once you know r equals 5, you can write down that equation. Okay? So this could be another way of thinking about this. Okay, now the first part says, without using calculator, solve this equation. Where W steric, of course, denotes the complex conjugate of W. Give your answer in the form a plus b iota. एक equation है आपको और आपके पास दो unknowns हैं. Remember what we used to do for this? एक equation से दो unknowns वैसे तो नहीं find कर सकते ना, but there was a trick that we used here. क्या कर सकते हैं? So W की जगह पे we input this a plus b iota की form के अंदर है ना, इसकी जगह ये डाल दें और W star की जगह पे a minus b iota. Now you'll simplify this. एंड पे जाके रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देंगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगे, ए और बी आ जाएंगे. राइट, फर्स्ट पार्ट हो गया था. फर्स्ट पार्ट में इशू था, सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में. चलो लेट्स डू इट. सो W इक्वल्स a प्लस बी आयोटा एंड W स्टार इक्वल्स a माइनस बी आयोटा. ये दोनों इसके अंदर इनपुट कर दें. नाउ दैट गिव्स यू 3 into a plus b iota plus 2 iota. दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस दैट वी डिड. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे बिल्कुल स्टार्ट में. Equals 17 plus 8 iota. Now this gives us 3a plus 3ab iota plus 2a iota minus 2b iota squared. And that equals 17 plus 8 iota. And we get 3a plus मैंने आदत लगती है यहाँ पे 3a plus 3b iota होना चाहिए यहाँ पे. This should be 3b iota only. And yeah, the rest is okay. अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आ गया? 3a plus 3b iota plus 2a iota plus 2b because iota square minus 1 होता है. So ये minus 1 बन गया और आपके बाहर साइन चेंज हो गया. Plus 2b. Now we have 3a plus 2b plus 2a plus 3b iota. That equals 17 plus 8 iota. You've got two complex numbers that are equal to each other. That means the real part on the left side should be equal to the real part on the right side, and the imaginary part on the left side should be equal to the imaginary part on the right side. So you get two equations from this. 3a plus 2b equals 17 and 2a plus 3b equals 8. You'll solve these two equations, find the values of a and b. ठीक है, ये आपने कर लिया? क्या आती है? Anyone? जिसने कर लिया हो या? What are the values of a and b? इसकी वर्किंग शो करनी है आपने और फिर आपके पास a और b आ जाएगा. Anyone who has the answers? A is 7 and B is minus 2, so W equals 7 minus 2 iota. Okay, thank you. 7 minus 2 iota ये आपको चाहिए था. That's it. ठीक है? So जब आपके पास W भी आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उसका कॉन्जुगेट भी आ जाए एक इक्वेशन के अंदर, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, उसको x plus y iota या a plus b iota वो अज्यूम कर लेते हैं और फिर कॉन्जुगेट में बस वो साइन चेंज हो जाता है. Simplify करते हैं, equate the real parts and then equate the imaginary parts. That's all you do. Okay, that's the first part. Any problems with this? No. Okay, second part. Second part में तो मसला नहीं है. Okay,
let's do the second part as well. In an arcing diagram, these two loci intersect at the point P. Express the complex number represented by P in this form, giving the exact value of theta and the value of r correct to three significant figures. आपको दो लोसाई बनाने हैं और उनको देखना है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, फिर उस पॉइंट को लिखना है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है इस फॉर्म के अंदर. ग्राफ से देख के नहीं कर सकते, ओके आप स्केच कर रहे होंगे, सो ग्राफ से आपको कैलकुलेट करना होगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एस्टिमेट नहीं कर सकते ग्राफ से. सो ग्राफ बना के उसके बाद कैलकुलेशन करनी, ओके. अच्छा, ग्राफ इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन बेटर. Okay, let's say we've got this arcing diagram. This is the real part. This is the imaginary part. We've got two loci that we have to make here. One is argument of z minus 2 iota equals pi over 6. Argument of z minus 2 iota, this equals pi over 6. And the other is modulus of z minus 3, this equals z minus 3 iota. Okay, these are the two loci that we have to draw. Okay, argument of z from the point 2 iota. सबसे पहले 2 iota point आप प्लॉट करेंगे. Let's say this is that point. This is the point 2 iota. इससे angle pi over 6. So, इसके right side पे you draw a horizontal line like this. यहाँ से angle measure करेंगे. The angle should be pi over 6. That's 30 degrees. 30 degrees की आप line बना दें यहाँ पे. So let's say this is that line. This is angle pi over 6. You have to be on this line somewhere. That's one condition. Okay? Now the second condition is distance of z from 3 is equal to the distance of z from 3 iota. So there's 1.3 somewhere, that will be here, and there's 1.3 iota, and there's another 0.3 that will be on the real axis. ये दो points हैं. इन दोनों से you have to be at an equal distance. 2 points से equal distance. What's that locus? Perpendicular bisector. Perpendicular bisector. इन दोनों पॉइंट्स का perpendicular bisector. इनका मिड पॉइंट देख लें. मिड पॉइंट से आपने एक लाइन पास करनी है. That is perpendicular to this. Where will that line pass through? It's going to pass through the origin, right? Origin से pass करेगी because this is 45 degrees. This is 45 degrees because the angles आपकी लेंथ दोनों सेम है. 3 and 3 दोनों एंगल सेम है 45 डिग्रीज. तो उसका जब इस तरह से आप बनाएंगे परपेंडिकुलर, आपको यहाँ पे ओरिजिन से पास करते हैं वहाँ पे भी 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा होगा. दिस इज व्हाट द लाइन इज गोइंग टू लुक लाइक. ओके, just going to change this a bit. So it looks like this. ये आपका एंगल pi over 6 है और ये एंगल pi over 4. This is the point of intersection. Is this clear to everyone? Any problems until this point? ठीक है? How do you find this point now? This point is P. ये आपको figure out करना है और उसको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. वो तो बाद में देखते हैं. थीटा फाइंड करना है और आपको आर फाइंड करना है.
Now, do we already have theta? इस पॉइंट का आर्गुमेंट आपको पता है क्या आएगा? It's pi over 4, right? The argument is pi over 4. We know that. How do we know that? This was the line. इसका हमने perpendicular bisector बनाया. This angle was pi over 4. क्यों pi over 4 था? ये भी 0.3 है, ये भी 3 है, दोनों लेंथ्स इक्वल है. एंड वी हैव अ 90 डिग्रीज हियर. ठीक है, वो दोनों लेंथ्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे एंगल्स ये कितने बन गए दोनों? ये भी पाई ओवर 4 है और ये ऊपर वाले भी पाई ओवर 4 है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ वी मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स वी हैव अ 90 डिग्रीज हियर. नाउ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना इधर. सो इफ दिस इज 90 डिग्रीज और पाई ओवर 2 एंड दिस इज पाई ओवर 4, तो रिमेनिंग एंगल ये वाला कितना आएगा? दिस इज ऑल्सो पाई ओवर 4. मेक सेंस? So we know this angle is pi over 4. जो p का argument है वो कितना है? It's pi over 4. So argument of the point p, that is pi over 4. यहाँ तक हमें पता है. Now the problem is we need to find the modulus somehow. ये distance find करना है. ये distance हमें figure out करना है. जब ये distance आ गया हमारे पास, तो हम उसको r e raised to power iota theta वाली फॉर्म के अंदर फिर हम लिख सकते हैं, because we'll have the modulus, we'll have the angle theta, दोनों चीज़ें होंगी, हम उसको लिख सकते हैं. ठीक है? How do you find that distance now? अब कुछ trigonometry यूज़ करनी पड़ेगी और वो distance find करना पड़ेगा. What can we do? What if we make use of this triangle? This triangle. Can we use this? We know this angle. This angle is pi over 4. We know this angle as well. This is pi over 2 plus pi over 6. Right? ये 90 degrees here. That's pi over 2. Plus this angle, which is pi over 6. So total angle कितना हो गया? Pi over 2 plus pi over 6. Anyone? 4 pi over 6, that's 2 pi over 3. So this is our angle. ये angle कितना हो गया? 2 pi over 3. ये भी angle पता चल गया. We can find the third angle as well if we need. But ये दो angles पता है, और क्या पता है हमें? ये length पता है इस triangle की. This length is 2. So we have two angles and a side. We do not know the other sides. Okay. अब ये कर सकते हैं हम थर्ड एंगल भी फाइंड कर लें. कैन यू फाइंड दिस एंगल एज वेल? पाई में से माइनस कर दें ये दोनों, पाई ओवर 4 एंड 2 पाई ओवर 3. देन वी कैन यूज द साइन रूल आफ्टर दैट. यस, ये क्या आता है? तीसरा एंगल क्या आता है? पाई में से माइनस कर दें पाई ओवर 4 एंड 2 पाई ओवर 3. व्हाट डू वी गेट? पाई माइनस 2 पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 4. व्हाट्स दिस? This is the angle at P. This was the angle at pi over 12. We've got this other angle as well. ये angle भी आ गया. Now you can just use the sine rule. ठीक है? You can say you want this length OP. OP divided by the angle opposite to that, which is 2 pi over 3. Sine of 2 pi over 3, that equals this length 2 divided by the sine of the angle opposite to that, that's sine of pi over 12. And now you can find the length OP from this. ये आपके पास आ जाएगी. ठीक है? What do we get? Anyone? What's the length OP? 6.69. उसने कहा था 3 significant figures तक. So this is the modulus. अब वो जो complex number है, that is represented by P. What is that? R e raised to power iota theta. So it's going to be 6.69 e power iota pi over 4.
This is the complex number that we have. ये वो point of intersection represent कर रहा है. ठीक है? Clear है सबको? I think we have reached a point that if you do more questions now, you'll start getting demotivated now. कि अब वो difficulty level है वो इस तरह के. Even if, yeah, so let me tell you one thing. ये आप 5 के points marks भी इस पेपर में अगर lose कर देते हैं, let's assume, आप नहीं करेंगे, पूरे marks lose नहीं करेंगे, do something, you can still get an A star. नहीं मतलब this will be one of the most difficult questions on this paper. ठीक है, वो बैलेंस होता है. अगर 2 मुश्किल क्वेश्चन आ जाए इस तरह से थ्रेशोल्ड ज़्यादा नीचे चला जाता है. थ्रेशोल्ड उसके हिसाब से नीचे चला जाता है. थ्रेशोल्ड और नीचे. इस तरह के पार्ट्स आप देखें, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, उनकी एग्जामिनर रिपोर्ट निकाल के देखें. हर इस तरह के क्वेश्चन उसको लिखा होगा hardly anyone got this right. Very few people were able to do this question right. So that's okay. Unless you're aiming for a distinction, so unless you're Fatma or Amin or a couple of other people, Ariba or maybe some other people, then you have to do this question. But aapko karne padenge. So remember that golden rule. If you get stuck at a question, you cannot figure out what to do in a few minutes, just skip the question. उसके ऊपर आपने टाइम नहीं वेस्ट करना. पेपर 3 में मेन इशू ये होता है, दरम्यान में पेपर के दरम्यान में कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है, यू गेट स्टक एट दैट, और आपका बाकी पेपर जो हो सकता है आगे आसान वाले क्वेश्चन तो वो आप मिसअप कर देते हैं. बस ये मसला है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपने दरम्यान में पेपर में टाइम स्पेंड नहीं करना. एंड पे जाएंगे, कुछ हो जाएगा उससे, कुछ नहीं होगा, दैट्स ओके, गेट सम पार्शियल मार्क्स एंड दैट्स ओके, दैट्स गोइंग टू बी गुड इनफ. ओके, दिस इज व्हाट द एग्जामिनर रिपोर्ट सेज फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए पार्ट ए आसान था, राइट? आसान था ना पार्ट ए. व्हाट डज इट से? दिस क्वेश्चन पार्ट ए के लिए वो कह रहे, दिस क्वेश्चन प्रूव डिफिकल्ट as very few realized that they needed to express w as u plus v iota and so on. So this just reading what it says for part A should make you feel better. Part so yeah. Yeah, so most people realize that argument of z was pi over 4, तो वो आपको डायग्राम से नजर आ रहा था कि आर्गुमेंट उस लाइन के ऊपर लाई करेंगे pi over 4 होगा, but then they were not able to do anything else after that. Okay, so it's okay, it's all right. इसके बगैर भी you can still get even an A star. Okay, but that doesn't mean कि आप वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे. Do something, आप कुछ ना कुछ करेंगे, पार्शियल भी आपसे कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो that's going to be good enough for most of you. Okay. अच्छा, 18 का फर्स्ट पार्ट हमने पहले भी किया था, जब बिल्कुल बेसिक्स कवर कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के. वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स z प्लस 4 इक्वल 0. इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके. सो z इक्वल्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर्ड minus 4 into 1 into 4, that divided by 2 times 1. And now you can simplify this. You get minus 2 square root of 3 plus minus 4 into 3, that's 12. 12 minus 16 divided by 2, and that gives you minus 2 square root of 3 plus minus 2 iota over 2. And you get two answers, minus square root of 3 plus minus iota, minus square root of 3 plus iota, or minus square root of 3 minus iota. These are the two answers that you get for this. ठीक है? ये हमने पहले भी किया था. Now let's look at the second part of this. It says state the modulus and argument of each of these roots. Now this is 3 marks, modulus and argument. अच्छा, एक रूट को हम z1 कह देते हैं. Let's say this is minus square root of 3 plus iota, and the other is, let's say, z2. That is minus square root of 3 minus iota. What's the modulus of z1?
square root of 3 whole squared plus 1 squared, and that's going to turn out to be 2. ये clear है? What about the argument? Argument के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? We find the basic angle. Basic angle के लिए we have 1 over square root of 3. What's alpha? Pi over 6. The basic angle is pi over 6. Now we look at the quadrants. ये कौन से quadrant के अंदर है? Minus square root of 3. The real part is negative. Imaginary part is positive. So it's towards the left and up. So somewhere here. Second quadrant के अंदर आपका ये basic angle बन रहा है. And it's pi over 6. So what's the argument then? Argument of Z1 is pi minus pi over 6, which is 5 pi over 6. So you found the modulus and the argument of this first root. अब उसी तरह उसने कहा find the modulus and argument of the second root. What about that now? Modulus will be the same. It's the same two numbers. Square root of 3 and 1 वही वहाँ पर आ रहे हैं, बस साइन का डिफरेंस है. डिस्टेंस तो वही होगा ओरिजिन से. हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये. We can say the modulus of Z2 should also be 2. What about the argument? देखिए कॉन्जुगेट है. एक में इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, दूसरे में इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है. So all that's happening here is if Z1 was here, Z2 is going to be just reflection of that in the horizontal axis. वो उतना ही नीचे चला जाएगा. ठीक है. तो अगर ये ऊपर वाला एंगल 5 pi over 6 था, तो नीचे वाला कितना आएगा? minus 5 pi 6. 5 pi over 6. Because they're going clockwise there. And you'll say argument of Z2 is minus 5 pi over 6. And that's something that's always true for conjugates. उनके modulus same होते हैं. Arguments are negative of each other. एक का negative दूसरे का argument होता है. Is this fine? Any problems with this? No? Okay, let's do the third part. Now in the third part, it says showing all your working, verify that each root also satisfies this equation. Now we've got two solutions for this equation. उसने क्या प्रूव करें कि वो दोनों इसको भी satisfy करते हैं. And this equation is z power 6 equals minus 64. What are the two roots that we have? Z1 is minus square root of 3 plus iota, and Z2 is minus square root of 3 minus iota. You have to prove that each of these also satisfies this equation. So how do you verify that some number satisfies an equation? You input that in that. तो इसको input करेंगे इसके अंदर, इस equation के अंदर, simplify करेंगे, and we'll prove that it turns out to be minus 64. So what do you have to do? Minus square root of 3 plus iota whole power 6 equals minus 64, and then you can evaluate this thing. Minus square root of 3 plus iota whole power 6. How do you evaluate that? You can split it into powers of 3. Binomial से कर ले. Binomial से कर सकते हैं. That's another possibility as well. You'll have 7 terms. Then you simplify all of that, and it'll turn out to be minus 64. सब कुछ cancellation हो जाएगी वैसे. First step के अंदर ही सब कुछ cancel हो जाता है. आप कर सकते हैं if you want. First step में सब कुछ cancel हो जाएगा. Iota simplify करना पड़ेगा. Iota simplify करेंगे, आप कुछ cancellation हो जाएगी. But you'll have to do the same thing, the whole process for this as well. वो सब कुछ इसके लिए भी करेंगे. How many marks do you have for this? 3 marks. So rather than inputting these numbers in this equation directly,
because it's going to take quite long, बहुत लंबा method हो जाएगा. What we can do is, you see, in the second part, they have made us calculate the argument and the modulus and the argument of both of those numbers. Once we have the modulus and argument of those numbers, of these complex numbers, what we can actually do is we can convert it to the other form. E power iota theta वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. पावर्स इवैल्यूएट करना हमेशा उस फॉर्म के अंदर आसान होता है, बिकॉज वो सिर्फ पावर को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है. इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तब उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. वो क्या फॉर्म होती है? राइट दैट हियर, आर ई पावर आयोटा थीटा. इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें दोनों नंबर्स को. व्हाट इज Z1 बिकम? मॉडुलस क्या है? 2 into e power iota into the argument. The argument is 5 pi over 6 for the first one. So we have iota 5 pi over 6. This is Z1. Similarly, we can write Z2. Z2 is 2 e raised to power minus iota 5 pi over 6, because the argument here was minus 5 pi over 6 and the modulus was 2. हमने इन दोनों को इस E वाली फॉर्म के अंदर लिख लिया. And now instead of inputting this thing in that equation, we can input these numbers. ये input कर देते हैं उस equation के अंदर. Let me write that equation again. Z power 6 equals minus 64. Let's input both of these complex numbers in that equation. So we input Z equals 2e iota 5 pi over 6, and we input Z equals 2e raised to power iota minus 5 pi over 6. इन दोनों को इनपुट करते हैं उसकी जगह पे इस इक्वेशन के अंदर. अच्छा, उसके अंदर इनपुट करेंगे, क्या आएगा अब आपके पास? यू विल गेट 2e raised to power iota 5 pi over 6 whole raised to power 6, that equals minus 64. ठीक है. अच्छा, let's simplify. 2 raised to power 6, what's that? 64 e power iota 5 pi over 6 into 6. 6 आपका ये नीचे वाला कैंसिल हो गया. You're left with this. This equals minus 64. ठीक है. 64 तो आ गया. आपको ये प्रूव करना है कि this thing equals minus 1 somehow. How do you do this now? 64 को डिवाइड करते हैं वहाँ पे जाके. Okay, let's do that. We are left with e power iota 5 pi equals minus 1. How do we prove this now? Yes. इस फॉर्म को इसके बाद इसको cos वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. So once you get to this step, remember there's another form as well. R into cos theta plus iota sin theta. ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, आप R क्या है इसके अंदर? बाहर तो 1 है. R is 1. What do you get? 1 into cos of theta. Theta is 5 pi plus iota sin of 5 pi equals minus 1. Now what is cos of 5 pi? It's minus 1. ये आप कैलकुलेटर से evaluate कर लें. Sin of 5 pi is 0. And you get minus 1 equals minus 1. Do the same thing for the other one. You have 2 into e raised to power minus iota 5 pi over 6 whole raised to power 6. That equals minus 64. अब हमने क्या किया? ये इसके अंदर इनपुट किया.
Now let's simplify this as well. You get 64 e power minus iota 5 pi equals minus 64. Again 64 को वहाँ पे जाके divide कर दें if you want, and that gives you e power minus iota 5 pi equals minus 1. अब आपने ये prove करना है. Again, what you can do is you can convert it to this form. R is 1 again, so you've got 1 outside, into cos of theta. The angle is minus 5 pi here, minus 5 pi, plus iota sine of minus 5 pi equals minus 1. Cos of minus 5 pi, that's again minus 1. That's again minus 1. Sine of minus 5 pi, that's again 0. And you get minus 1 equals minus 1. And that proves that these two are roots of this equation as well. So पहले पावर फॉर्म में करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई क्योंकि हम आगे नहीं कर सकते कोई और. So we try to convert it to another form because we know sine of anything that's a multiple of pi is 0. First part, without using a calculator, solve this equation. Iota w square equals 2 minus 2 iota whole square. ये आप कैसे करेंगे? ये आप कर सकते हैं ऐसे? इसको बस सिंप्लीफाई कर लें. 4 minus 8 iota plus 4 iota square, and that gives you iota w square equals 4 minus 8 iota minus 4, and you get iota w square plus 8 iota equals 0. Okay, you've got a quadratic term. Sorry, क्या करें? आयोटा कॉमन ले लें, उसका क्या फायदा होगा? Sorry, अंडर रूट कैसे लेंगे? आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब क्या करें? ये कर सकते हैं यहाँ पे. अगर हम इसको इधर ले जाएं, आयोटा अगर उससे रिलेटेड, चलो ओके, लेट्स डू दैट. आयोटा w स्क्वायर इक्वल्स माइनस 8 आयोटा. आपके पास ये था. नाउ यू कैन जस्ट कंपेयर द टू. लेफ्ट साइड पे आपके पास एसेंशियली आ रहा है w स्क्वायर आयोटा, बट यू कांट एक्चुअली डू दैट. वो नहीं कर सकते बिकॉज w इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. w के अंदर एक रियल पार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है. वो नहीं कर सकते बिकॉज उसने कहा है ना ऊपर w इज w कुड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. w आपको पता नहीं है रियल है कि कॉम्प्लेक्स. अगर उसने बताया होता रियल है फिर आप रियल अज्यूम करते हैं, बट इट्स नॉट गिवन देयर कि ये कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, आप ये कर लें, आप आयोटा को कैंसिल कर दें. आयोटा इज अ नंबर, राइट? सो यू कैन कैंसिल दिस आउट. सो व्हाट यू गेट w स्क्वायर इक्वल्स माइनस 8. या अब यहाँ पे क्या करें? माइनस 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, दैट बिकम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा. ठीक है, ये आपके पास है. बट वी मिसिंग समथिंग हियर. लेकिन वो कंपेयर करना वुड नॉट बी करेक्ट हियर. कंपेयर हम तब करते हैं प्लस माइनस, हम यहाँ पे बस करें, तो प्लस माइनस है. सो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा. ओके, कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज w इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हम कंपेयर तब करते हैं, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, एक है a प्लस b आयोटा. x, y, a, b दे आर रियल नंबर्स. फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा x इक्वल्स a एंड y इक्वल्स b. दैट वी कैन डू. बट यहाँ पे w इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन नॉट से कि ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, इनको इक्वेट कर दें. बिकॉज w के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से हो सकता है x प्लस वाई आयोटा. तो जब ये आयोटा वाला पार्ट इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो रियल बन जाएगा. सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर. वो नहीं कर सकता. ठीक है, ऑल्दो इस केस के अंदर जस्ट बाय कोइंसिडेंस यू गेट द सेम थिंग एट द एंड, बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू डू इट. ओके, इज देयर अनदर वे टू डू दिस? आप इसको ये भी कर सकते थे. आप इसको करते आयोटा w स्क्वायर प्लस 8 आयोटा
and then apply the quadratic formula. It's a quadratic equation, right? So you can say W equals A equals iota, B equals 0, and C equals 8 iota. W equals minus B, so that's 0, plus minus square root of 0 square minus 4 into iota into 8 iota divided by 2 iota. So what do you get from that? Plus minus square root of minus 32 iota square divided by 2 iota, and that gives you plus minus square root of 32. 32 क्या होता है? It's 4 square root of 2 divided by 2 iota, and you get plus minus 4 square root of 2 over iota. अब iota को denominator से ख़त्म करना है. What you can do is you can multiply से ऊपर 2, yes. अब iota को ख़त्म करना है. अब इसको iota से multiply divide कर दें. Yes, आपके पास आ गया plus minus 2 square root of 2 iota. उस तरह भी कर सकते हो. ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिस तरह आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाते हैं, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं. यू गेट द सेम रिजल्ट एट द एंड. Sketch an arc diagram showing the region R consisting of points representing the complex number Z which satisfy this condition. Okay, क्या करेंगे? इसको लिख लें यहाँ पे. C minus 4 iota modulus that is less than or equal to 2. ये आपने ड्रॉ करना है. सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं. This is what we get. Now this means is distance of Z from 4 plus 4 iota, that is less than or equal to 2. Okay, distance of Z from 4 plus 4 iota, that is less than or equal to 2. तो क्या करें, वो पॉइंट ड्रॉ कर लें. This is 0, real part, imaginary part. Let's say this is 2, this is 4, 2, 4. ये पॉइंट प्लॉट करते हैं पहले. 4 plus 4 iota. इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 के इक्वल या उससे कम. तो क्या होएगा? सर्कल बनेगा और उस सर्कल के अंदर वाला पार्ट इसके लिए वैलिड. ओके, so that's all you got to do. Draw a circle of radius 2. So it might look like this. ये आपने रेडियस 2 का सर्कल बना दिया. इस सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है. लेस देन और इक्वल टू है, तो आप ये अंदर वाला पार्ट सारा शेड कर दें. ठीक है, दिस इज द लुक. ये क्लियर है? ठीक है. इक्वल है, फिर इट्स बेटर दैट यू ड्रॉ इट डॉटेड. यस, अगर वो लेस देन होता सर. ये क्लियर है? लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट, B2. Okay, now it says for the complex numbers represented by points in the region R. अच्छा, रीजन R कौन सा है? ये वाला रीजन है. इस रीजन को उसने R का है. इस रीजन के अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है सर. It is given that modulus of Z is between two numbers P and Q, and the argument is Z between two numbers alpha and beta. Find the values of P, Q, alpha, beta, giving answers to 3 significant figures. अब ये हमने एक वो डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. मैंने आपको एंड पे लोसा की एक बात बताई थी. सर्कल लोकस है, उस सर्कल के अंदर मिनिमम मॉडुलस एक पॉइंट से सेंटर तक लाइन बनाएंगे. जहाँ पे वो पहले टच करेगी वहाँ तक मिनिमम मॉडुलस होएगा. जहाँ पे सेंटर को क्रॉस करके दूसरे पे जाके कट करेगी वो आपका मैक्सिमम मॉडुलस होएगा. मॉडुलस के लिए ये कंडीशंस थी. आर्गुमेंट के लिए एक आपका टेंजेंट नीचे वाली साइड के ऊपर, एक टेंजेंट ऊपर वाली साइड पर. नीचे वाला जो टेंजेंट होगा वो मिनिमम आर्गुमेंट होएगा, ऊपर वाला टेंजेंट मैक्सिमम आर्गुमेंट होएगा. ये 4 वैल्यूज आपको फिगर आउट करनी है. ये उसने कहा. ठीक है, यस मैम. Okay, now we have to find
मॉडुलस ऑफ z बिटवीन p and q, सब मॉडुलस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड दिस इंटरवल। सो यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट सर, आर्गुमेंट इज z, अच्छा उसने कहा है इस रीजन के अंदर जो मॉडुलस है वो p और q के दरमियान में है, मॉडुलस p और q के दरमियान में है। इस अच्छा मेरी बात सुनो, इस रीजन के अंदर आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो यहाँ पे ना पॉइंट होता, यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, इधर होता सर्कल के ऊपर, यहाँ पर होता, कोई कहीं भी हो सकता है ना पॉइंट आपका। हर पॉइंट का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, इसका ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट का ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट का ये डिस्टेंस है, एंड फॉर एवरी पॉइंट यू हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। उसने कहा है कि इस रीजन के अंदर जो मॉडुलस ऑफ z है वो p और q के दरमियान में है, यानी कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू वो p है, p से छोटा नहीं है, उसका मैक्सिमम वैल्यू q है। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फिगर आउट करनी है कि मिनिमम वैल्यू मॉडुलस की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मॉडुलस तो हमेशा, अगर यहाँ पे सिर्फ z है ना तो इसका मतलब है z माइनस 0, सो डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। अगर z माइनस समथिंग एल्स होता फिर उस पॉइंट से लेते, उस पॉइंट से लेते। इस तरह यहाँ पे ऊपर था जब हमने लोकस ड्रॉ किया, जब हमने ऊपर लोकस हमने ड्रॉ किया वो क्या था, z माइनस समथिंग एल्स, इसमें 4 + 4 आयोटा से डिस्टेंस देख रहे थे, उस पॉइंट से देख रहे थे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 0 है, ओरिजिन से देख रहे हैं z माइनस 0। ओरिजिन से डिस्टेंस आपका मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट हियर। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस ओरिजिन से इस रीजन के अंदर कहाँ पर आ रहे हैं। रिमेंबर हमने इसके लिए क्या किया था, हमने कहा था सेंटर तक लाइन बनाएंगे, इसको एक्सटेंड कर दें, एक साइड में मैक्सिमम होएगा, दूसरी साइड में मिनिमम, ये मिनिमम होएगा। ये दोनों डिस्टेंसेस फिगर आउट करना, ठीक है, ये क्लियर है। Let's call these points something. Let's call these points something. Let's say this is C, this is A, this is B. वो तो डिस्टेंस है ना, P और Q डिस्टेंस है उन पॉइंट्स के, तो वो तो नंबर है कोई, ये मैंने पॉइंट्स डिनोट किए हैं, वो पॉइंट A है, वो पॉइंट B है। अच्छा अब हमें क्या करना है, OA डिस्टेंस फाइंड करना है और OB डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। अब OA कैसे फाइंड करें, OB कैसे फाइंड करें। यस, सो बेसिकली OC फाइंड कर लें, जब OC आ जाएगा उससे फिर OA भी निकाल लेंगे, OB भी आ जाएगा, राइट। OC फाइंड कर लें, वो तो पता है ना, वो तो डायमीटर है। ओके, OC फाइंड कर लें, OC स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर, वर्टिकल 4 है, ये लेंथ 4 है, हाइपोटेन्यूज इज दिस, लेकिन उसमें लेंथ नहीं पता ना आपको, फिर ये लेंथ नहीं पता, ये लेंथ नहीं पता, ये लेंथ नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है उस ट्राइंगल का। ओके अच्छा, OC स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 32। ये आ गया आपके पास, दिस इज एक्चुअली 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। क्या OC इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, OC आ गया। अब उसने क्या कहा है, OA चाहिए और OB चाहिए। OA क्या होगा, अभी तो किया ही नहीं है, और फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है आपका, क्या -2 करें फिर। जी अलीमा, देखिए हमें OA डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। हमने OC निकाल लिया, ये डिस्टेंस यहाँ तक। OA चाहिए था, रेडियस क्या है सर्कल जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसका रेडियस 2 है ना, तो रेडियस माइनस कर रहे हैं इसमें से 2 माइनस किया, आपके पास OA आ जाएगा। अच्छा, उसने कहा हुआ है कि गिव योर आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए, इसके आप वैल्यू निकालने क्या आती है। इसी तरह से OB, ये आप देख लें क्या आएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2, ये वैल्यूज क्या आती है मुझे बताएं।
अब बताएं ना जब पूछा 3.657. 3.657. So how should we write it? 6. उसने 3 significant figures का है. जब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी होती है, यू हैव टू फॉलो दैट, अदरवाइज आपका मार्क कट जाता है. अदरवाइज आप ज़्यादा दे सकते हैं. अच्छा, what about the other one? 7.66. Now this is P and this is Q. ये आपके पास P और Q की वैल्यूज आ गई. यहाँ तक ठीक है? Okay. Now you need the minimum possible argument and the maximum possible argument. अच्छा, आप देखें, आपका जो आर्गुमेंट है इस सर्कल के अंदर, वो देखें कहाँ पे हो सकता है. या अगर ये एंगल मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे हो सकता है? मिनिमम एंगल आप नीचे जाते जाए कहाँ पे होएगा? जहाँ पे ये टेंजेंट बनेगा, राइट. और मैक्सिमम कहाँ पे बनेगा? ऊपर वाला टेंजेंट. ये दो एंगल्स आपको फिगर आउट करने हैं. ये एंगल्स कैसे फिगर आउट करें? यस, ये दोनों एंगल सेम है. सो ये एंगल और ये एंगल they're both the same. Yes, because it's tangents coming from a single point outside the circle, the angle same. Yes, Iman. इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं आप? अच्छा, क्या करें? Okay, so once we can use this triangle, your triangle. Do we know this already? Yeah. निकाले तो नहीं, वैसे हम निकाल सकते हैं. ये भी 4 है. हमें ये एंगल पता है पूरा, ये पूरा एंगल पता है. 4 और 4 थे, पाई और 45 डिग्री की लाइन है ना, आपको नजर आ रही है. आपने ड्रॉ इस तरह की थी, वो इस तरह की थी कि नहीं की थी? नहीं. अच्छा, आपको पता है ये 4 है, ये 4 है, तो ये एंगल कितना है यहाँ तक? 45 डिग्रीज बनेगा, राइट. आपको नजर ही आ रहा है वैसे डायरेक्टली, अगर अदरवाइज आप निकाल लें. नहीं है ना, क्योंकि देखें आपको पता है हॉरिजॉन्टली 4 है, वर्टिकली 4 है. जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो वो 45 डिग्रीज वाली लाइन है. आप इसके लिखना है दिस एंगल इज जस्ट पाई ओवर 4. अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें एंगल्स ये वाले चाहिए. हमें एक ये एंगल चाहिए, दिस इज अल्फा, और एक हमें ये पूरा एंगल चाहिए, दिस इज बीटा. ग्रीन वाला एंगल हमारे पास आ गया है. दिस इज व्हाट? दिस इज 45. दिस एंगल इज पाई ओवर 4. ठीक है. अब हमें सिर्फ ये करना है, क्या नहीं समझा? tan इनवर्स ऑफ 4 ओवर 4. tan इनवर्स ऑफ 4 ओवर 4. लेकिन आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब है 45 डिग्रीज की लाइन बनती है. ये लोकस में आपको अक्सर जब ड्रॉ करते हैं आपको ये जहन में होना चाहिए कि लाइन कहाँ से पास कर रही है. सर हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, आई थिंक ये हमने कहा था 3 से पास करनी चाहिए लाइन. क्यों पास करनी चाहिए? बिकॉज पाई ओवर 4 एंगल था, तो जितना हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करें उतना ही वर्टिकली ट्रैवल करना जरूरी है. ओके, ऑलराइट. सो वी गॉट दिस एंगल पाई ओवर 4, ये आ गया. अब क्या है, हम एक ट्रायंगल बना लें कोई भी. लेट्स मेक दिस ट्रायंगल. लेट्स से ये ट्रायंगल है, इसमें हमें ये लेंथ पता है, ये 2 है, और हमें क्या पता है? हमें OC भी पता है. OC की लेंथ कितनी है? 4√2. ओके, लेट मी जस्ट राइट दैट here. OC is 4√2. And let's call this point something as well. This is, let's say, x. CX equals 2. ये दोनों लेंथ पता है. हम बीटा फाइंड कर सकते हैं? नहीं, बीटा नहीं, इसको कुछ और नाम दे दें छोटे वाले एंगल को.
हमें चाहिए ये ऊपर वाला एंगल. लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा. लेट्स फाइंड दिस एंगल थीटा. We have perpendicular and we have hypotenuse. Perpendicular hypotenuse में कौन सी रेशियो होती है? sin theta equals 2/4 square root of 2. यहाँ से आपके पास थीटा आ जाएगा. ये क्या आता है? थीटा क्या आता है? 0.36 136, so that's 3614, right? Okay, so this is theta. तो आपके पास मैक्सिमम आर्गुमेंट क्या हो गया? ये पता चल रहा है आपको? pi/4 प्लस दैट टाइम. और मिनिमम क्या हो जाएगा नीचे वाला? pi/4 माइनस थीटा, राइट? एक दफा आप थीटा प्लस करेंगे ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, एक दफा थीटा माइनस करेंगे नीचे वाला एंगल आ जाएगा. सो अल्फा इक्वल्स pi/4 plus 0.3614 and beta equals pi/4 minus 0.3614. What do we get? 1.15 and beta? Yes, alpha is the other angle. Yes. क्या आ रहा है? This is all. कर एंड पे फाइनल आंसर डेसिमल चाहिए ना आपको, तो पहले करने का छोड़. That's your choice. So you got alpha and beta as well. ये आपके मिनिमम और मैक्सिमम एंगल्स. तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़्यादा तो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली इस पार्ट के. राइट, तो लोकस बनाने वाला पार्ट तो आसान है. उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके ये वैल्यूज फिगर आउट करनी है. Let's do question number 13 first. Okay, we have a variable complex number that is given by this. Z equals 1 plus cos 2 theta plus iota sin 2 theta. This is a complex number. ये आपके पास x plus y iota form में लिखा हुआ है. This is the real part and this is the imaginary part. ठीक है? Where theta takes all values in this interval, so it could be anything in this first quadrant or the fourth quadrant. In दोनों quadrants के अंदर कुछ भी हो सकता है. Now in the first part it says, show that the modulus of z is 2 cos theta. Let me write that complex number here. 1 plus cos 2 theta plus iota sin 2 theta. How do you find modulus of this complex number? Modulus क्या होता था? Real part squared plus imaginary part square and square root of that. Let's do that. 1 plus cos 2 theta whole squared plus sin 2 theta whole squared and then square root of that. That's the modulus. इसको simplify करेंगे, it should turn out to be 2 cos theta. ठीक है? Now let's do that. इसके बाद आगे trigonometry है सारी basically. आपने इसको prove करना है. This is 2 cos theta. Okay, how do we do this now? We can say, let's actually just expand it first. 1 plus 2 cos 2 theta plus cos square 2 theta plus sin square 2 theta. Now what about this? Cos square of an angle plus sin square of the same angle. What's that equal to? That's 1. Right? ये चीज़ 1 होगी. Because angle same है ना? So it becomes 1. So you get 1 plus 2 cos 2 theta plus 1. Yeah, so that's the identity, right? So it's sin square A plus cos square A identical to 1. You could have anything in place of A as long as it's the same in both cases. यहाँ पे भी वही हो और यहाँ पे भी वही हो. The result is 1. Okay? अच्छा, अब इसको simplify कर लें. You get 2 plus 2 cos 2 theta. That's what we are getting from this. अब देखिए आपको prove क्या करना है. आपको prove करना है this is 2 cos theta. We have a single angle here.
हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास डबल एंगल आ रहा है, तो डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है. सो वी नो द डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर cos 2 थीटा. कौन सी वैल्यू यूज़ करें यहाँ पे? हमें फाइनल आंसर चाहिए cos की टर्म्स के अंदर. सो वी शुड बी यूजिंग द फॉर्म दैट हैज़ cos इन इट. सो एक आपके पास इसकी फॉर्म होती है 2 cos square theta minus 1. You've got two other forms as well, 1 minus 2 sin square theta and cos square theta minus sin square theta. हम इस वाले में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज हमें फाइनल रिजल्ट cos की टर्म्स में चाहिए. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस? वी हैव 2 plus 2 into 2 cos square theta minus 1 and then square root of that. Now 2 and 2 get cancelled. We simplify this. 2 plus 4 cos square theta minus 2. That gives you square root of 4 cos square theta. Take square root of this and you get 2 cos theta. This is modulus of z. ये आपने प्रूव करना था. Okay? Modulus of z equals 2 cos theta. Now the second thing you need is you have to prove that the argument of z is theta. How do you find argument? सबसे पहले क्या करते थे? बेसिक एंगल फाइंड करते थे. What's that? Y over x. Imaginary part over the real part. Sin 2 theta over 1 plus cos 2 theta. So tan alpha equals sin 2 theta over 1 plus cos 2 theta. ठीक है? अब आपने प्रूव करना है किसी तरह से that the argument is theta here. ये उसने कहा प्रूव that the argument is theta. What can we do here now? इसको सिंप्लीफाई करना है किसी तरह से. अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता डायरेक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं? लेट्स अप्लाई द डबल एंगल आइडेंटिटीज एंड सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट. हो सकता है कोई कैंसिलेशन हो जाए उसके बाद. अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते डायरेक्टली. So let's do simplification. इसको convert कर लें single angles, where it becomes 2 sin theta into cos of theta. In the denominator we have cos 2 theta. Cos 2 theta का हमने क्या लिखा था अभी? 2 cos square theta minus 1. Now what happens when you do this? You get 2 sin theta into cos of theta divided by 2 cos square theta. Now 1 cos gets cancelled, 2 gets cancelled. You're left with sin over cos. Sin over cos क्या होता है? Tan. So you have tan of theta equals tan of alpha. Tan alpha equals tan theta. What does that mean now? Alpha equals theta. ठीक है? ये आपका आ गया बेसिक एंगल. ओके? अब वो थीटा जो है वो तो एक्चुअली नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. तो कौन से क्वाड्रेंट में आप हो सकते हैं? फर्स्ट में भी हो सकते हैं, फोर्थ में भी हो सकते हैं. उसने कहा थीटा की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 तक है. सो दिस इज +π/2 एंड दिस इज -π/2. तो आपका बेसिक एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, इधर ऊपर भी अल्फा हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. इट कुड बी एनी वन ऑफ द टू. Tan positive. How do you know that tan is positive? देखिए हमें ये नहीं पता एक्चुअली कि थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव, हमें नहीं पता. सो इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव. -π/2 से लेकर +π/2 तक ये पूरा इंटरवल बन रहा है आपके पास, राइट? तो आप ऊपर भी हो सकते हो, नीचे भी हो सकते हो. नाउ वट एवर इट इज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आर्ग्यूमेंट इवेंचुअली क्या होगा? आर्ग्यूमेंट तो आपका वही बनेगा, ये आपका थीटा ही आएगा. अगर ऊपर होगा तो वो भी थीटा है, नीचे होगा तो वो भी थीटा, वो नेगेटिव हो जाएगा. थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है वो खुद से नेगेटिव हो जाएगी वहाँ पे. अगर थीटा की वैल्यू लेट्स से -π/3 होती लेट्स से, तो आर्गुमेंट ऑलरेडी -π/3 खुद से -π/3 आ जाता है. आप बस आर्गुमेंट को क्या कहेंगे? आर्गुमेंट इज थीटा. इफ इट्स पॉजिटिव इट विल ऑटोमेटिकली टर्न आउट टू बी पॉजिटिव हियर. इफ इट्स नेगेटिव इट विल ऑटोमेटिकली टर्न आउट टू बी नेगेटिव हियर. बस को थीटा लिख देंगे, जो भी वैल्यू होगी दैट्स योर आर्गुमेंट.
मेक सेंस? क्योंकि उसने आपको बताया हुआ है कि वो इस इंटरवल के अंदर है, तो वो साइन उसका खुद ही हैंडल हो जाएगा वहाँ पर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा। ये आपने प्रूव करना था। इट्स अ 6 मार्क क्वेश्चन। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ये आपने प्रूव कर दिया। माइनस भी हो सकता है ना, देखें ये माइनस भी हो सकता है। इसमें आप क्यों कह रही कि माइनस नहीं हो सकता है? क्या माइनस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हमें तो नहीं कहा नहीं हो सकता। दोनों हो सकते हैं ना, हमें नहीं पता। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। वी कांट प्रूव आइदर ऑफ देम। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। यहाँ पे तो कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है ना, ठीक है? देखिए थीटा है ना, थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, आई थिंक आई गेट वेरी गेटिंग कंफ्यूज्ड। बेसिकली यहाँ पे हमने tan अल्फा इक्वल्स tan थीटा किया था ना। हम जनरली क्या करते होते थे, बेसिक एंगल फाइंड करने के लिए इन दोनों साइड्स को पॉजिटिव करते थे, पहले दोनों को पॉजिटिव करता था। यहाँ पे मसला ये है कि जब हम एंगल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वी डू नॉट नो वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें पता ही नहीं है कि थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट? तो जो भी है हम एज्यूम करते हैं कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव है। अब थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो वो नीचे चला जाएगा, अगर पॉजिटिव हुई तो ऊपर चला जाएगा। वो थीटा की वैल्यू खुद, अगर वो पॉजिटिव हुई तो ऊपर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो खुद से नेगेटिव हो जाएगा। हमें खुद नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। मेक सेंस? ओके, ये आपके पास आगे मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। एनी अदर प्रॉब्लम्स ऑन दिस? नो? Second part, it says prove that the real part of 1 over z is a constant. 1 over z, 1 over z का real part आपने prove करना है that this is positive. How do you do this? 1 over z है क्या? We know the value of z, right? Z is 1 plus cos 2 theta plus iota sine theta. This is what we have. We have to prove that the real part of 1 over z, which is actually this number, this expression, that is a constant. How do you do that? So आपका अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हमें पता नहीं है रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। वो हम तब कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर डिनोमिनेटर से आयोटा एलिमिनेट कर देंगे उसके बाद फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? How do you eliminate iota from the denominator? It's a fraction. Remember कैसे डिवाइड करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ? Conjugate of denominator that gets multiplied and divided. Denominator ये आपके पास, इसका conjugate क्या होएगा? 1 plus cos 2 theta minus iota sin 2 theta. That's the conjugate. बस imaginary part का साइन चेंज कर दिया आपने, इससे आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है? Now in the numerator you get 1 plus cos 2 theta minus iota sin 2 theta. In the denominator you have a plus b into a minus b, which is a square minus b square, 1 plus cos 2 theta whole squared minus iota sin 2 theta whole squared. ठीक है? Now we can simplify this. It becomes 1 plus cos 2 theta क्या कर सकते हैं? ओके, लेट्स एक्चुअली सिंप्लीफाई दिस। ये क्या आता है आपके पास? 1 plus 2 cos 2 theta plus cos square 2 theta
plus iota square, sorry, minus iota square into sine square 2 theta. This is what we get in the denominator. अब iota square क्या होता है? It's minus 1, so we can just replace iota square with minus 1, and that gives us 1 plus 2 cos 2 theta plus cos square 2 theta plus sine square 2 theta. And again, cos square plus sine square. What is that? That's 1. So we have 1 plus cos 2 theta minus iota sine 2 theta divided by 1 plus 2 cos 2 theta plus 1. ठीक है? अब देखिए डिनोमिनेटर में तो कोई भी आपके पास आयोटा नहीं आ रहा, सिर्फ न्यूमरेटर में आ रहा है. वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द रियल पार्ट. हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए. ठीक है? तो इमेजिनरी पार्ट को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अब इनको अलग अलग लिख लें पहले. 1 plus 2 cos 2 theta over 2 plus 2 cos 2 theta. This is the real part. Imaginary part is iota sine 2 theta minus iota sine 2 theta over 2 plus 2 cos 2 theta. Now we are only concerned about this real part. This is the real part. इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लें आगे. पूरा आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. You get 1 plus cos 2 theta over 2 into 1 plus cos 2 theta. Now 1 plus cos 2 theta and 1 plus cos 2 theta, they get cancelled and you're left with 1 over 2. This is the real part of 1 over z, and it turns out it's a constant. It's 1 over 2. ये आपने प्रूव करना था. ठीक है? सो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट को दोबारा और सिंप्लीफाई कर लिया, एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ कॉन्जुगेट. सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़्यादा ये ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन था एक तरह से. कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो बेसिक कॉन्सेप्ट से यूज़ हो रहे थे, ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही थी.